something went wrong. आपका आवाज ठीक है? हाँ, आवाज बिल्कुल सही आ रही है मुझे, बिल्कुल सही आ रही है। ठीक हो गया, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एजेंडा ये है कि एक रेसिटेशन छोटी सी कर लेते हैं। वो है हमारे पास एक वो, ओके, और उसके बाद फिर वही नॉर्मल GDSCs जो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं उनका इंट्रोडक्शन है, और फिर जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो है, और फिर Q&A एक सेशन रख लेंगे लास्ट पे ना, 1 आवर। ओके, sounds good to me. ठीक है। सो हाशिम करीम है हमारे साथ, ठीक है? वो किर्गिस्तान में अभी पढ़ रहे भी हैं और करें वहाँ से, तो ही विल बी गिविंग द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, ठीक है? तो हाशिम, अगर आपको आवाज़ मेरी आ रही है तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दें और स्टार्ट करते हैं फिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी नेक्स्ट का एजेंडा में वो था कि जो हमारे स्पीकर होस्ट कोलैबोरेटर्स हैं, ठीक है, हमारे साथ इस इवेंट के लिए जो हैं 8 GDSCs जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनसे कोलैबोरेट किया था, इंक्लूडिंग GDSC पियाज है और UET लाहौर की है, GK की है, ठीक है, और डिफरेंट हमारी जो कश्मीर की मस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर IEEE की सोसाइटी है उसने कोलैबोरेट किया था, IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग है, CS सोसाइटी है, और पेशावर से CUSIT सिटी यूनिवर्सिटी ने। तो मैं चाहूँगा जो हमारे GDSC लीड्स हैं डिफरेंट, वो अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करवा दें ना कि वो किस यूनिवर्सिटी से हैं, अगर पॉसिबल है किसी का तो। अस्सलाम वालेकुम। हसीब है, GDSC लीड फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी पेशावर। हसीब कौन से थोड़ा और भी बताओ कौन से ईयर में हो? एंड GDSC का बैच हर साल चेंज होता है ना? जी जी जी, हर साल। ओके, हाँ, पियाज से भी है हसन, अगर आप अनम्यूट कर लें। हसन आवाज नहीं आ रही सही तरह। Can you hear me now? Yeah, good now. I'm Hassan. I'm the GDSC from Pras. Thank you all everyone for joining us. Especially a lot of Praskians in the room right now. Hopefully it's going to be a really good session. Thank you Aslan bhai for being here with us today. ज़िया भाई, ज़िया है हमारे साथ ज़ैबिस इस्लामाबाद से। ज़िया, कैन यू हियर मी? चलें फिर अभी नेक्स्ट चलते हैं। I can see internet issues काफी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। भाई, इफ यू कैन रिमेम्बर, ये समिट पर आपको सबसे पहले मैं ही मिला था जब आप आए थे।
अच्छा, अब कहाँ मिले थे हम? जो निशात में सबसे पहले जब आप समिट हाँ पर आए थे, GDSCs के समिट पर, तो मैंने आपसे फिर डिटेल में डिस्कशन भी की थी गूगल्स के रिलेटेड के किस तरह ज्वाइन करने का। हाँ, I remember first day वाले दिन, right? मैं जी दूसरे जी दोनों दिन आया था मैं, हाँ बट याद क्या था मुझे। गुड टू सी यू, या तो तब आई थिंक मैं काफी लोगों से मिला था मैं तब इससे GDC के बैच में से ही, दैट वाज वेरी नाइस। जी। और तो लेकिन जनरली आप जैसी इंटरव्यू हुए थे तो आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर समिट हो रहा है, फिर हाँ, नाइस, या आई रिमेंबर नाउ। बोल सकते हो तो just write in the chat. Okay, all clear? Yes. जो important चीजें हैं जिससे you all can learn, because at some point मैं भी आप लोगों की जैसे ही था studying at a university and तब तक शायद Google join करना एक बहुत कोई ख्वाब भी नहीं था, it was such a big thing कि शायद कभी सोचा भी नहीं था, right? तो I was in a very similar place, so I want to show कि eventually how you can get from this place to having a very good successful career. And doesn't mean that everybody has to join Google, right? Everyone has their own path. लेकिन यहाँ पे basically मैं focus करूँगा कि क्या कुछ चीजें जो मैंने सीखी, यानी जो मैं अपने आप को बताता अगर मैं अपने छोटे version से मिलता तो like it's like a things that I've learned and things that you can find useful. Okay, so but this is pathway to more like having a successful career rather than Google, because Google is not the only successful career. Okay, okay. There's a question about how you got into derivatives trading. That's a very nice question. Derivatives trading is basically financial instrument. That's because I work in finance. I'll talk about this. So that's this is part of the presentation as well. Okay, so moving on. So my journey, I think my life revolves around these three different places, and I think why I'm mentioning the places, because these places really has a strong impact on my growth and my learning. Originally from Lahore, I spent my early life in Lahore. Then I went to Hong Kong. So I went to Hong Kong to study, and that's what not a lot of people go to Hong Kong. A lot of people go to like UK, Canada. लेकिन मेरे पास शायद वो financial means नहीं थे उस वक्त, तो Hong Kong was one of the few countries जो scholarship offer करती थी. तो but me and a bunch of जो मेरे दोस्त थे, they got full scholarships to study for 4 years in Hong Kong. So that's a huge benefit for people coming from Pakistan. So I mean, now you are in university already, but this is something to always keep in mind that कुछ कई दफा कहीं ऐसी जगह से opportunity आ जाती हैं जहाँ से you not expect, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, but there is still opportunities there. So Hong Kong is very underrated. ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, लेकिन it was an amazing place to study. What was my major? I'll talk about that. So Hong Kong, I spent like 6.5 years. Studied there, started working there. वहीं पे काफी मेरी initial career growth भी वहीं पे हुई है. तो I feel like जो most of the मेरी ज़्यादातर जो learnings मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं वो Hong Kong में ही सीखी थी, because that was the learning ground for me. And then 2020 में I moved to Zurich, and Zurich में अब मुझे 2.5 साल हो गए हैं, and this is where I live and I'm based, and I this is where the Google office is. I basically, the only reason for me to move to Zurich was to join Google, because Hong Kong में Google का office नहीं है, तो इसलिए I have to move there. So that's the high level. I think these things will be valuable as we go along. The question about my scholarship. So Hong Kong offers 2 types of scholarship. One is you can actually, there are multiple layers of scholarships. एक है कि you can get like 30 or 40% of the tuition fee. फिर होता है full tuition fee, and the third one is full tuition fee and living allowance. तो the third वाला है, that's like the best one. फिर उसमें आपको tuition fee भी fully covered होती है और living allowance मिल जाता है. So I got that tuition fee and living allowance one, but it was only for the first 2 years. उसके बाद मुझे अपनी fees खुद arrange करनी पड़ी थी. वो I started working by then, and I was able to arrange my
ट्यूशन फीस, लेकिन शुरू में that helps a lot, क्योंकि आपको लिविंग अलाउंस मिल जाता है और आपको ट्यूशन फी मिल जाती है शुरू में. तो that was the reason why I don't, वरना मेरा कोई ऐसा कोई शुरू से गोल नहीं था. आई थिंक अगर स्कॉलरशिप ना मिलती तो I would have probably stayed in Pakistan or studied there. So okay, so my student year. So this is very important. I finished my graduation in 3 years. Generally 4 years में होती है, but I was able to do it in 3 years. And this is the three, like, I can clearly see कि तीनों साल कैसे different थे. And this is where I think all of you will be able to relate a lot. So when I entered in my university, and मैं basically School of Engineering में था, मैंने अपना major भी select नहीं किया हुआ था. तो शुरू में पहले साल में major को select भी नहीं करता. University में ऐसा ही है. तो you have a lot of option कि आप decide कर सकते हो क्या करना चाहते हो, right? तो पहला साल काफी एक्सप्लोरिंग होता है. यू एक्सप्लोर अ लॉट, आप लोगों से मिलते हो एंड यू टेक डिफरेंट कोर्सेज. मैंने पहले साल में बिजनेस कोर्सेज लिए थे, फिजिक्स कोर्सेज लिए थे, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज लिए थे, जस्ट टू सी के कंप्यूटर साइंस के एक्चुअली बहुत कम लिए थे. ज़्यादातर मैंने मैथ और फिजिक्स के ज़्यादा लिए थे, क्योंकि मेरा माई प्लान वॉज कि इधर आई डू कंप्यूटर साइंस या आई डू फिजिक्स. तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया हुआ था. मैं फर्स्ट ईयर में था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं फिजिक्स कोर्स भी लिया था, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट बिजनेस में भी था, तो मैंने 1-2 बिजनेस कोर्सेज भी लिए थे. दैट वाज कंप्लीट डिफरेंट एज वेल. तो पहला साल में आई थिंक ये काफी जैसे मैं लोगों से मिला. आई थिंक जब पाकिस्तान में होते हैं तो एटलीस्ट मेरे लिए ये था कि आई वाज वेरी कंपेटिटिव बैक देन. तो उसमें ये होता है कि सब एक ही क्राइटेरिया से जज होते हैं, राइट? ग्रेड्स हैं या फिर मार्क्स हैं, सेम एग्जाम सबको मिलता है, एंड देन एवरीवन काइंड ऑफ सब सेम क्लास में होते हैं, सेम एग्जाम मिलता है, तो सबको एक ही क्राइटेरिया से जज किया जाता है. तो तब वो शायद यूनिकनेस नहीं नजर आती. तो जब व्हेन आई वेंट देयर, आई थिंक ये मुझे सबसे पहले रियलाइजेशन हुई थी कि हर कोई यूनिक है. लाइक इट्स नॉट अ 1-to-1 कंपैरिजन, बिकॉज़ कई लोग हर बंदे का डिफरेंट कॉम्पोजिशन था कोर्सेज का. कोई लोग थोड़े से बिजनेस पढ़ रहा है, कुछ फिजिक्स पढ़ रहा है, कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कुछ ये पढ़ रहा है. लाइक काफी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे. तो हर एक बंदे की यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी. तो वो एक किस्म का कंपटीशन और कंपैरिजन वाला पूरी फिलॉसफी वो वहीं पे रुक जाती है. देन इट्स लाइक, अच्छा नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट्स यूनिक इन मी. लाइक मुझे क्या पसंद है या मैं क्या करना चाहता हूँ. इट डजंट मैटर कि बाकी ये कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट रियली लाइक it's not 1-to-1 related, right? तो पहले साल में met a lot of people, talked to a lot of people, understood कि क्या लोगों की क्या mindsets होते हैं. और यहाँ पे again I was a bit lucky कि दुनिया भर से लोग आए हुए थे, तो सबके बहुत different mindsets थे, different perspectives थे. So that was the first year. And then second year में I started coding. So second year was when I took my first programming course. And मुझे याद है when I took my first programming course, अब मेरे आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके थे, इधर अपने कॉलेजेस में या अपने यूनिवर्सिटी से पहले ही पढ़ के कुछ कोर्सेज किए हुए थे, कुछ ने क्या किया हुआ था. काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी. स्पेशली आई थिंक जो इंडिया से मेरे काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने ऑलरेडी कोडिंग बेसिक्स पढ़ी हुई थी जब वो यूनिवर्सिटी में आने से पहले. तो मेरे लिए ये काफ़ी लेट स्टार्ट था. तो सेकेंड ईयर हो गया और मैंने अभी तक कोई कोडिंग नहीं शुरू की, कुछ नहीं पढ़ा. तो जावा की ज़्यादा सबसे पहली लैंग्वेज जो मैंने पढ़ी थी वो जावा की थी. एंड 3 weeks कोर्स शुरू होने के 3 हफ्ते बाद मैंने अपनी सीवी में लिख दिया था कि आई नो जावा, और मैंने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था. सो लिटरली 3 हफ्ते हुए मुझे जावा शुरू किए हुए और मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, लेट्स सी. एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी ये कुछ कई दफा काम कर जाता है, लेकिन मेरे कई दफा नहीं काम करता, लेकिन फॉर मी इट वर्कड. एंड एक छोटे से स्टार्टअप हायर्ड मी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम. तो मैं यूनिवर्सिटी में जावा सीख रहा था और शाम को मैं काम करता था, एंड देन वही कॉन्सेप्ट्स मैं वहीं पे अप्लाई करता था. सो इट्स लाइक लर्निंग एज यू आर डूइंग थिंग्स एज यू आर लर्निंग राइट अवे. तो एंड during this my first job was working on an Android app with Java. So मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं हर चीज गूगल करके Stack Overflow से किसी ना किसी तरह से I would work. I remember लेकिन मेरा बेनिफिट था कि
द पर्सन आई वाज वर्किंग विद, जो मेरी पहली जॉब में जो मेरा पार्टनर था, वो उसे टेक्निकल, उसे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी, तो उसके लिए सारी कोडिंग नॉलेज मेरे में थी, तो उसे नहीं पता था कि मैं अच्छा कोड लिख रहा हूँ बुरा कोड लिख रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ लिख रहा था बस। तो दैट वर्क फॉर मी। ऐप, लेकिन ऐप काम कर रही थी, लेकिन इट वाज वेरी इनएफिशिएंट, बहुत स्लो थी एंड क्रैशेस थे, बग्स थे, लेकिन कुछ ना कुछ लिख रहा था। तो देन आई रियलाइज कि वाओ, कि तब मुझे ये देखा कि टू बिल्ड थिंग्स, टू एक्चुअली वर्क इज एक्चुअली अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग इन स्टार्टिंग। तो अभी ये मैंने पहली दफा इस तरह का काम कर रहा था मैं, कि प्रोग्रामिंग का काम कर रहा था। उससे पहले कुछ और काम किए हुए थे, लेकिन प्रोग्रामिंग का काम पहली दफा कर रहा था। तो दैट वाज वेरी लाइक इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि यार इतना बड़ा मजा आता है तो बनाने में, और साथ साथ सीख भी रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं रहा, क्योंकि बाकी आप कुछ पढ़ाते हो या बाकी कोई भी जॉब करते हो, तो आपको जैसे टीचिंग की जॉब हो गई, उसमें सीखना बहुत कम होता है, लेकिन दिस was very like focused on learning. So what was your role in this first job? My role was Android developer. Yeah. So I was the only developer in the team. I was the only person जो के काम कर रहा है इस ऐप पे। वो ऐप बाद में लॉन्च नहीं हुई कभी, अगर लॉन्च हुई थी तो बड़ा मजा आता, लेकिन लॉन्च नहीं हुई, लेकिन that was the first app I worked on. Then second year में I realized कि अच्छा, and I would just try to spend more time with people who were very smart, right? Who were very intelligent. जो भी मेरे आसपास लोग थे जो मुझे बड़े स्मार्ट और बड़े कूल और बड़े एनर्जेटिक लगते थे, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। जी नेचुरली था, इसका मुझे बहुत फायदा हुआ लेटर, बट दिस वाज अ नेचुरल थिंग फॉर मी कि यार अच्छा ये बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, या ये बंदा इसके साथ मैंने काम करना है। तो my first job, I worked there for like this was a part-time job. It was 6 months part-time. Full-time मैं साथ पढ़ाई भी कर रहा था मैं। And second year में फिर एक और major transition आया. I think that was also a very important transition. That उससे पहले तक अब मैं ऐसा स्टूडेंट था जिसने कभी क्लास मिस नहीं की, कभी, और क्लास में सबसे आगे बैठने वाला, राइट? तो उस तब मैं और मैं काफी टीचर्स पे डिपेंडेंट था। लाइक अगर टीचर ने कुछ समझा दिया है तो ठीक है, और मैं खुद नहीं पढ़ता था ज्यादा, बस टीचर ने समझा दिया तो ठीक है। that was my whole thing for until now, until my second year of university. फिर मैंने कोर्सेज में क्लासेस में जाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारी क्लासेस में अटेंडेंस रिक्वायर नहीं होती थी, तो मैंने क्लासेस में जाना बंद कर दिया। एंड देन वो एक फोर्सिंग फंक्शन बन गया टू लर्न बाय योरसेल्फ। एंड फिर मैं वो कोर्सेज की स्लाइड्स या यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन पढ़ के या खुद पढ़ के बुक्स पढ़ के जैसे भी, तो मैं सारा I think second year से onwards I barely went to any class. Even in third year I didn't go to much classes. मुझे फिर classes में जाके सही नहीं लगता था, and I just started working. I just started learning by myself. That was a huge transition. I think that ये इससे बंदा इसकी वजह से मैं खुद सीखना सीख गया। कैसा ठीक है कि मुझे टीचर की किसी जरूरत नहीं है, मुझे खुद जो भी सीखना है मैं खुद सीख सकता हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस आया था इंसान के अंदर। तो that was super. I think that was a very important skill I learned in my second year. उसके बाद थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में फाइनली प्रोजेक्ट था, तो वो दैट दिस वाज आल्सो लाइक दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि एक्चुअली यूजफुल था। आई थिंक जैसे मैंने फाइनली प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि आई शुड रियली फोकस कि ये फाइनली प्रोजेक्ट एक्चुअली लोगों के काम आए। तो इवेंचुअली हमने एक ऐप स्टोर पेश किया, आईफोन ऐप भी लॉन्च की थी, जो कि आई थिंक 2-3 साल तक थी, उसके बाद 2 साल तक थी, उसके बाद बंद हो गई थी। तो फाइनली प्रोजेक्ट था कि अगर आपने किसी ऐसे बंदे से बात करनी है जो सुन नहीं सकता, तो वो आप एक ऐप में अपना सेंटेंस बोलते हो, और ऐप वो एक साइन लैंग्वेज, सो जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज परफॉर्म करते हैं, राइट? तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, चाइनीज साइन लैंग्वेज है, हर काफी कल्चर्स की अलग साइन लैंग्वेज होती है। तो वो फिर एक एवटार अमेरिकन साइन लैंग्वेज परफॉर्म करता था, जिससे आप दूसरे बंदे जो आपकी आवाज नहीं सुन सकता उसे अपना मैसेज समझा सको। तो यू टेक आउट योर फोन, यू स्पीक समथिंग, एंड then it would perform an avatar would perform the signs. So this was very useful. I think कुछ लोगों ने इस्तेमाल भी किया था, बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया था, लेकिन 2 साल तक ऐप अवेलेबल थी। उसके बाद मुझे सिंस एज आई सेड मुझे वो बिल्डिंग और स्टडिंग में बहुत बिल्डिंग में बहुत मजा आ रहा था, काम करने में बहुत मजा आ रहा था। तो मैं स्टार्टअप्स की फ्री में हेल्प करना शुरू हो गया। अगर कोई मुझे कूल स्टार्टअप या प्रोजेक्ट नजर आता था, मैंने जाकर कहता था कि अच्छा ये मुझे अच्छा लग रहा है, आई वांट टू वर्क ऑन दिस, एंड
yeah, and I would just start helping out. कुछ मेरे दोस्त थे who had startups, so I just started to like help out. Yes, they can read as well. Yes, generally they can read, but that was just, लेकिन उनकी native language sign language होती है, so it's you can talk to them in their language basically. So that's this is the answer to one of their chat questions actually. Coming back to the startups part, they were so I started helping that out. उसके बाद से जो courses थे, I think I focused a lot on my courses in the third year. जो basic सारे networking, operating systems, algorithms, सारे जो core skills हैं, जो foundations हैं, वो सारी मुझे I think third year में ज़्यादा मिली थी, and it was a very like फोकस्ड पीरियड. इसमें थर्ड ईयर में काफी एंटी सोशल था. आई थिंक ये सारे काम में काफी ज्यादा टाइम जा रहा था मेरा. सो दैट वाज अ वेरी लाइक इंटेंस लर्निंग पीरियड, एंड दिस इज समथिंग यू नीड इन योर लाइफ. आई थिंक यू नीड अ फ्यू इयर्स ऑफ इंटेंस डीप लर्निंग, एंड देन उसके बाद ग्रोथ आनी शुरू होती है. लाइक सो दैट वाज वन ऑफ द फ्यू इयर्स फॉर मी जिसमें मैं लाइक इट वाज हेड्स डाउन वर्क, लर्निंग एंड वेरी फोकस्ड. So so that was my student years. After that, I graduated. I joined my career path. Now, this slide is very important क्योंकि काफी लोग ये करते हैं कि काफी लोग कहते हैं, मुझे स्टूडेंट्स कई दफा कहते हैं कि अच्छा ओके मैं सेकंड ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं किस चीज पे फोकस करूँ? शुड आई फोकस ऑन लाइक AI, शुड आई फोकस ऑन क्रिप्टो, या शुड आई फोकस ऑन Web3 या फिर वेब डेवलपमेंट? लाइक दिस इज ऑल लाइक किसी पे फोकस करूँ, एंड पीपल आर स्केयर्ड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग आउट. तो ये बहुत नॉर्मल है. बट इफ आई लुक एट माय करियर पाथ, आई स्टार्टेड इन द स्टार्टअप्स, जो कि कंप्लीट डिफरेंट टेक स्टैक था. उसमें आपको बस, लेकिन उसमें फायदा ये था कि अब मैंने कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है. हर इंडस्ट्री से मुझे आई थिंक एक बड़ी यूनिक चीज सीखने को मिली थी, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. सो एक्सप्लोरिंग फॉर द फर्स्ट 3-4 years of your career is super helpful, ताकि आपको एक तो काफी डाइवर्स फील्ड से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हर फील्ड का एक यूनिक टेक वाइज भी एंड कल्चरल वाइज भी आपको एक यूनिक लर्निंग एस्पेक्ट्स होते हैं. तो जैसे स्टार्टअप्स में आपको आप एक बहुत छोटी टीम होती है. आई थिंक जो स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया था वो 4 लोगों की टीम थी इंक्लूडिंग मी, तो मेरे अलावा 3 और बंदे थे. तो व्हाटएवर यू डू, यू हैव ओनरशिप इन द प्रोसेस और इन द प्रोडक्ट. तो दैट वाज वेरी, उसमें एक्सट्रीम ओनरशिप का एलिमेंट आ जाता है. यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिल्डिंग, एंड इफ यू डोंट यू डू योर वर्क प्रॉपर्ली, कंपनी विल डाई. ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सिंस इट्स अ स्मॉल टीम, तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत जल्दी रैपिड होती है, एंड यू गेट अ फास्ट फीडबैक लूप. ऐसे आज आपने कोई कोड लिखा है, कल रिलीज हो गया, परसों यूजर्स यूज करेंगे, एंड आपको फीडबैक मिल जाएगा अच्छा कि क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कोड, राइट? तो दिस फास्ट फीडबैक लूप इज सुपर इंपॉर्टेंट. Then we have then crypto. I worked for crypto, which is जब काफी नई फील्ड थी और काफी हाइप थी इसके अराउंड, और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे क्रिप्टो फील्ड में, they were like extremely passionate about it. They were like, this is the next big thing, इसने दुनिया को बदल देना है, and we should work on this. And it was also very जिस पार्ट में मैंने काम किया था, that was very like high सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स. क्रिप्टो के एक्सचेंजेस उस दिनों में बहुत हैक हो रहे थे. हर हफ्ते न्यूज मिलती थी कि क्रिप्टो एक्सचेंज हैक हो गया एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स चले गए. तो दैट वाज अ ह्यूज, तब मैंने सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में काफी कुछ सीखा, एंड जस्ट वर्किंग विद पीपल हु आर लाइक एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट देयर फील्ड. Okay, there's a question in the chat, how to look for startups in Pakistan or go for remote work. So that's true. So startups in Pakistan, so startups often in startup communities come around with different like platforms. So मैं remote startups के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, तो I can share more about that. Remote startups, there's like AngelList is a very common platform for that. Remotework.com, I think that's also one very popular website where you'll see job postings of remote companies. TechCrunch, Twitter, they talk about remote startups a lot as well. So these are the sources where you can look for remote startups. And जो लोग hire कर रहे हैं वो definitely remote.com पे डाल देते हैं. Remotework.com, I think, या remote.com है. And then AngelList is another common platform. So that's where you can look for startups. And I recommend working for startups is a really good experience. Like I think क्योंकि वो extreme ownerships की वजह से आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, and fast feedback loop as well.
So yeah, okay. So then there is fintech. So uske baad I started working for fintech. This is where I did the derivatives trading part, right? So derivatives is like a financial instrument जो हम trade करते हैं. तो and this यहाँ पे काफी अलग किस्म की learning थी. यहाँ पे I was curious about finance at that point जब मैंने ये join किया. तो इसमें मेरा जो role था वो very finance heavy था. इसमें मैं coding कम कर रहा था और मैं finance concepts ज़्यादा समझ रहा था. So this was very different than anything I've done before. और इससे मुझे पता चल गया कि how technology is impacting other fields, like how जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो दिन के $1 million बचाती थी because of technology, right? So the impact was so clear कि अगर technology ना होती तो ये शायद कुछ भी काफी चीजें almost impossible होती. So that's where this is where you see, especially in fields like other life science, you see finance, you see insurance. ये सारी fields of technology इस्तेमाल करते हैं, तो you really feel कि how different it is, like how much impact technology can have on other fields. This is a very interesting perspective. Asha, okay, so how do you go from beginner in fintech to Goldman Sachs? So yes, that's a good question. So Goldman Sachs is the company that I work for. If people didn't know, is the fintech company. The question है कि beginner से fintech में beginner से आप ऐसे company में कैसे जा सकते हो? Goldman Sachs is very popular in the fintech space. So now the problem is people think you need to know finance to go to fintech, or you need to know insurance to go to insurance technology. You need to go life science to fully go to life science technology firms. Like, you don't. So if you go to their job post and if you see the requirements, they don't say that the learning finance or knowing finance is not a requirement. Requirement नहीं है. So you don't need to. I मुझे कोई finance का कुछ नहीं पता था. अलिफ बे भी नहीं पता थी finance की when I went to work for that firm. So I think a lot of people just assume कि मेरे पास ये knowledge नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता. When in reality, like, it's not even required. So that is there. Okay, now then after that, after finance, I started working for like Google, which is a very big tech firm with a very high scale and very high reliability. This is where like you have like we have like 2-3 billion users that are customers, and when you build software that is being used for billions of people, then उसमें scalability और reliability के बहुत impact रहता है. So you can see that technology stack is also completely different. Startups में I was working with like front end React and then JavaScript. I think crypto में it was C and JavaScript, and fintech में it was Java. Now I'm working on Go and Python and C in Google. So completely different tech stack. इसमें कुछ overlap है ही नहीं बिल्कुल. But the core part is that it's computer science under the hood. It's basically all computer science and computer engineering. So they all, in some way, which is common thing, and in general, my computer science skills improved as I worked in any of them, right? So that's so moving on. Okay, there's a question. Sir, how do you get Google internships? Software engineers get a remote job work. This slide is all about that. ये सारी जो आगे जो सारी slides आएंगी वो it's all about how to get like really good work opportunities and how to build a successful career, right? So it's not one thing. It's so it's आगे मैं slide जाएंगे. It's like multiple things. अभी तक all clear? I feel like I'm the only one speaking. Everything समझ आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? Okay, cool. Okay, let's go. So this is where I work. It's an amazing office. So I think I'm very lucky that I work here, and it's not only about office. I think जो लोग हैं amazing, very humble people. I think I'm the most braggy from all my colleagues. Very humble, very nice and kind, very, very, very smart. And पहली दफा बात करके शायद पता ही चलेगा कितने smart हैं, but as you get to know them, जैसे आप उनके साथ काम करते हो, you realize that they are incredibly smart and humble people. So it's a pleasure working. And then also I think that makes you when you join Google, oftentimes you feel like, okay, you're working with a lot of other smart people. You feel like you're out of place. You sometimes feel you're not. A lot of people that join Google feel like they're not good enough or something.
तो ये imposter syndrome होता है. लेकिन eventually I think because the culture is so well कि आपको you get confident and they help you gain that confidence that you are here, you deserve it, and you are good enough, right? So if I had to brag about my role, I basically help run the world's largest distributed compute infrastructure system. This is basically my role is in the Borg team. Since I think most of the people are technical here, so I can explain. Okay, so Google has this core layer of infrastructure on which everything else runs, like Docs, Gmail, YouTube, whatever, photos. So all the services run on a core layer of infrastructure. It is something similar to Kubernetes, but a lot more complicated to Kubernetes. So, and that's where I work. This is the team that I work on. So yeah. Okay. Next is let's move on. Oh, sorry. Okay, cool. So yeah, now let's jump to the main topic. Abhi tak you just heard my story, and that's the boring part of everything. I think the most interesting part is, okay, what can you learn from it, and what is the how to build a successful career, right? इसमें दो चीजें होती हैं. एक तो having a mindset that helps. Like there are certain elements that you can embrace, and that will just generally help you make better decisions and help you grow really fast. And the second part is very concrete strategies. Like isme the second part is like clear action items. Ye karo, and then things will be good, right? So it's a combination of both. The mindset is very important, and strategy is like also important. But like I would say mindset is like is the harder to change and harder to adapt, but it makes the most amount of difference as well. So first we'll talk about the mindset. Okay, what is really mindset for success? And you'll see like this is very common. It's ये ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी successful लोगों से मिला हूँ उन सब का यही mindset था. Like all of them would agree on the points that I'm going to talk about. So it's like kind of this. Everyone who has had a successful career will give you the same advice. So these are very generic advice. It's not a complete list, but I'm only mentioning the points that I think are very important. Okay. Okay. So then so first of all, right? So this is what I faced in my first career, my first year as well. How do you pick your career? What to do in your career, right? Kya karna hai, kya nahi karna. So, and this is I think one of the hardest things, but also one of the most important things to get it right. This lies in top of my priority. Like how to find what you want to do. For pehla is like, okay, generally use reading books. Parents कहते हैं कि do something practical, right? ऐसा कोई ऐसा career choose करो जिससे पैसे बन जाए. And if you read books or watch movies, वो कहेंगे do what you love, right? So it's like तो बंदा क्या करे फिर? So I'm on. So it's not that simple. You can't just. It's not okay. You can't. It's not one or the other. It's more complicated than that. So लेकिन क्यों लोग recommend करते हैं why do what you love? उसका क्या फायदा है? Like there are some basic really एक basic question है. Maybe a lot of you already thought about it, but it's important to really think about it. कि क्यों वो जरूरी है, वो काम करना जरूरी है जो आपको पसंद है. First of all, natural curiosity होती है आपकी उस चीज में already. Like अगर programming पसंद है तो you will be naturally curious about it. You will ask questions about it. You will look into things by yourself, right? And then उससे it's easier to do what you like for a longer period of time. Like अगर आपने दिन में 8 घंटे काम करना है तो it's much easier to do that you like, and you have more energy, more motivation, right? Two very simple. And the third part is also very important. If you ever want to be good in something, and it's very important to be good in something, you have the best shot of being good at what you love. That's the highest chances. You can also be good at something that you don't like, but generally the most probably you will be good at something you really like. Eventually, like shuru mein nahi, lekin eventually you'll become good at it. Like that's not a problem given enough time and given that you work on it. So, but how do you find like what do you really want to do? What you should do? So for that, it's a simple formula. Think about anything that for you it's like play, like it feels like play to you, but for others it feels like work. कि दूसरों को वो चीज काम लगे,
Lekin for you, it's like fun. So that's how, with that framework, you will be able to identify activities that you do. It can be general coding. It can be something specific in coding. It can be like system design or whatever, or it can be something, this is valid for non-software engineers as well. So this is, and it doesn't, you should, फौरन नहीं आ जाता शायद, कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को जल्दी पता चलता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता. That doesn't matter, because it's a very long game. It's like you will do that for the next 40 to 50 years. So it's okay if you don't get it. Like, for example, for me, like, for programming, coding was something I really found fun, and लोगों को नहीं पसंद थी. And sitting in front of a black and white screen all day, and I could do it all day without getting tired. It felt like play to me. So that's like that is very important. There's a question: what is better, loving what you do or doing what you love? So the thing is, if you the core, that's a good question. The core part is becoming good at something. If you become good at something, it's very easy that you will like doing that. And in order to become good at something, you have to love it. So they're all kind of related. Because if, for example, if you're good at something, right, you will sooner or later, people will come to you, people will ask advice about that thing. Like if you are like into programming, so for example, people will ask advice about coding, programming, or you will deliver value in that. You will do something that will make other people happy, or that will make deliver value to someone in that area. And that you'll receive appreciation, you'll receive good comments, and that will automatically make you like that thing. So that's how passions are developed. Like, you have just had curiosity and you do something, and then if you're good at it, people will come back to you. People are like, "Yaar, thank you so much for doing it. You are amazing. You are such a pro in this thing," right? And eventually, usse aapko sort lagta hai ki yaar, I have a passion of this thing. It's actually expertise pehle aayi hai aur passion baad mein aaya hai. It's not the other way around. A lot of people think it's the other way around, but it's like expertise come in first and passion builds up for that thing. So that's important. Okay. So let's move on. Okay. So again, this is so second most important thing. First is like you figured out what you want to do, right? That is done. Now what? The second part is people you work with. Now, iske baare mein kafi log sochte nahi hai, but this is this makes a huge difference. When you know what you want to do in your career, it can be specific, it can be general, it can be like, maine software engineering karni hai. It can be very specific to like, okay, maine data science karni hai, ya maine distributed systems padhne hai, whatever. You find people who you like and respect, who are also working on the same thing. People with very high intelligence, people with very high energy. And you find way to work with them. बेशक वो remote काम हो, in person हो, जैसे भी हो, वो बंदा पाकिस्तान में जहाँ मर्जी, it doesn't matter, right? You have to work with other people to maximize your growth. अकेले नहीं होने वाला ये. Okay, अकेले just doesn't make sense. But have a really high bar for people around you. Like, make sure that you set a very high bar of people you work with. You want to get the best of the best. You want to try working with the best of the best, right? And then your growth and learning will be so much more. And this is what a lot of, I think, so this can be when you're a student, when doing projects, right? Go work with the person who you think is like you have a very high sense of respect and also a strong sense of integrity in that person. So you find that person, and then eventually you try to learn from that person. So that is super important. And the third thing is just start building things. Ab jo log खास तौर पे first year, second year में हैं, and this is what I did as well, and it helped me a lot. कि just ज़्यादा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. Right? So you know coding, and it's a very, very valuable skill. Just start building something. Class projects are good, but they're not enough. So you need to do much more than that. And इसमें you don't need to think about will it be useful, will it make money, will it help me, will it deliver value? जरूरी नहीं है अभी फिलहाल. अभी के लिए just if you think it's a fun tool to build, just build it.
right? One of my mentees, he's currently building a meme generator. He's like, meme generators are मुझे memes बड़ी पसंद है, and I want to build. वो अभी coding सीख रहा है शुरू में, लेकिन he's like, I want to build a meme generator, and I said yes, go ahead. So doesn't matter. Abhi, you just want to code for fun, and at least in university, you just want to code for fun and explore and do build things and build multiple things. Build it, but a very important part is, if you build it build it with people, as I said, right? Keeping the previous thing in mind, try to build with people. That's going to maximize your growth. If nobody agrees to build it with you, then go ahead, then build it by yourself. ठीक है. उसके बाद show and sell it to the world. Whatever you build, and just make sure you show it to the world. Okay, उससे that will keep you accountable about what you build. Like, you will make sure कि वो जो भी बनाओ, that's a high quality stuff, right? So just build that, and eventually put it on GitHub, put it on public profile, make it public to the world. Instagram pe, Facebook pe, Twitter pe, LinkedIn, whatever, doesn't matter, right? Just publish it, show it to the world, and make sure that somebody actually try to use it. So if you use right now, it's super easy to build web apps, right? So you can build a web app or mobile app, just publish it, let people use it, then ask people how do you feel. So start doing this cycle, and this is like incredibly beneficial. If you and these things right in your CV, and this will be such a highlight. Okay, it's bande ne is already building stuff. People love companies love hiring builders. So you want to be a builder who has built things outside class projects. I think class projects are very small scoped, and they're not very. Sometimes it's hard to publish them and help others. So that's very important. Any questions on this before I move on? Okay, I think the question, there is a question, but I think that that was already answered, or I can answer generic questions after that. Okay, cool. Okay, so then next is perpetual learning. Now you have to understand that learning university mein khatam nahi hoti, especially people who are graduating, right? Third, fourth year students, learning won't stop there. Especially computer science field is evolving, and it keeps on evolving, and this is very important. So I would say that once in a while, at least once a year, try to read a book that you're really scared of, or subject that you hate, or subject that you don't like. Once in a time, no, you don't hate it, but you don't. It's too complex. You think ये बहुत difficult है. अगर ऐसी कुछ चीज आती है ना कि यार ये बहुत difficult है, at least साल में एक दफा just go and read it and study it. So this is like a बेशक वो पहली दफा नहीं समझ आएगा, दूसरी दफा भी नहीं समझ आएगा, तीसरी दफा भी नहीं समझ आएगा, लेकिन you try until you actually try to you understand it. This is like a bit like going to the gym. अब gym में जाते हो, you can't, and the first day you can't pick the heaviest weight, right? You have to train your body. पहले आप slow weight से pick करते हो, and eventually फिर कभी-कभी होता है कि you need to get out of your comfort zone. You need to go for the heavier weights and try to pick that up. It's exactly like that. You train your brain muscles, right? You have to try to do difficult things. Try to read the difficult things, because you're training your brain to understand difficult concepts. So reading books that scare you is like a very important aspect of it. And then core foundations. University mein you do study some core foundations. So that's why I think grades I don't think are as important, but the core, understanding the core foundation is important. I mean, kabhi hota hai, exams are not in line. Studying for exam is different than studying for the syllabus. So isliye main nahi kehta grades important. Generally, if you understand the core foundations properly, grades अच्छे आ जाते हैं. लेकिन कभी-कभी नहीं भी होता. So that's very important to read. For me, what books that scare you? For me, finance scared me a lot at some point. Finance में बड़े मुश्किल words होते हैं, and they have a lot of different concepts like derivatives and trading and all that. And yeah, there are a lot of difficult concepts in finance. But when I studied them, I realized that's okay. It makes sense. It gives you more confidence about yourself and about that you can understand difficult concepts. Sorry, that was I think I jumped to the chat very quickly. So this was a question in the chat for those of you who didn't notice.
Acha. So core foundations, then this is basic science, right? You don't need to, sometimes core foundations are just basic science, math, and basic computer science concepts. You don't need to go too advanced. Just core foundations are strong, that's good enough. And that's going to help a lot further. And lastly, take on complex tasks. If you see your project, your friend is stuck on a project, or like is working on, or is trying to do something difficult, try to do it with that person. Try to do try to join forces and try to solve that hard problems. Make it a habit. If you go for the easy problems, I've met people who have 10 years of computer science experience, right? But they just haven't solved hard problems. They just worked on easier problems. So usse koi fayda nahi hota. So you can, that 10 years of experience can be done in 1 or 2 years, given that you solve harder problems that give you pain, that makes you, that's hard, that makes you scratch your head. So if you're not solving that kind of problems, if you're not, if while you're doing coding, or if you're doing computer science, and it's not, you're not scratching your head, or you are not going through a bit of pain, that means you're doing too easy. So those tasks won't help you grow. So you have to hunt for these complex problems. और इस तरह की दुनिया में बहुत हैं. I'll share more how to get these problems. There are a lot of these problems that you can solve. There are many of them, but when you come across, do try to solve. Don't run away. It's okay. If worst case क्या होगा, you won't be able to solve, time waste हो जाता है. लेकिन वो time भी नहीं waste होगा. It's like even if you get 1% of the solution, you did learn something. So, and again, you try to get help. You try to work with people, as I mentioned earlier. You try to work with very smart people so that you can actually maximize your chances of solving that problem. So these key three things are uncomfortable. I think the first and the third point is very uncomfortable. Reading books that scare you and taking out complex tasks, but it is fundamental at this point in university and the early stages of the career. It's very fundamental to have that. Yeah, okay. Moving on. Now we talked about mindset. So mindset we talked about multiple strategies, like how to make sure you do what you want to do. Having people around you, and building things, becoming a builder, the whole learning path, how to really learn things and how to really go for difficult, more complex challenges. So now I'll talk about more concrete strategies. Okay? This is a lot more relevant. अब इसमें बदलेगा. अच्छा मेरा mindset है ये, ठीक है. I already have a very strong mindset of learning, of building things, and about working with people. What are the concrete steps that I can take to ensure that I have a successful career, or I get a good job? I get a job at Google, I get a job in Microsoft, Facebook, and Netflix, all that kind of big tech companies, or build your own company. It doesn't have to be, you don't have to work for a company. You can build your own company as well. So these are the strategies. And these are for software engineers only. Pehle jo mindset tha, that is more generic, and that's generic across multiple fields. Ab bhi student space, especially at your age in universities. So how many of you contribute to open source? Any raise of hands? Can people raise hands here? I don't think they can. Just add yes in the chat if you have contributed to open source in the past 1 year. Okay, 2 out of 86 people yet. 3. Never understood where to start. That's a very normal problem, working as a developer. 4, what is open source? 5, 6. Yeah, okay, nice. 7. That's good. So it's around 10%. 8 or 9, I don't know. Okay, I tried but didn't understand working as a backend developer. But open source, working as a backend developer, yes, but open source, yes or no? Never got anything how to start. Okay, so that's okay. So I like 10 to 15% of the people I think have done that. So that's not a bad number, but I think this should be much higher. So
Now a lot of people are like, and most probably मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा I don't know where to start, right? मुझे समझ नहीं आती कि open source seems like a very complicated thing. वहाँ पे it's not easy, and मेरा experience नहीं है, या मैं कैसे शुरू करूँ? Okay, now these are the 4 steps that you do. Again, it doesn't have to be more complicated. And ज़्यादातर लोग second step पे फंस जाते हैं. Pick your favorite language or language that you know. Any language that you think कि सबसे ज़्यादा आती है मुझे, just pick that. Right? You don't have to think any further. Open source product हर language में बहुत ज़्यादा available है. Second, pick a well-maintained repository. Now, this is and again, beginners के लिए हर language में opportunities हैं. कई repositories मिल जाएंगी जिसमें beginners के लिए issues हैं. तो अब repository pick करनी है. Now, this is where a lot of people get stuck. This is people second step से आगे नहीं जाते लोग. Now काफी लोग तो how do you pick a repository? So again, don't overthink it. Spend अपने कैलेंडर पे 3 घंटे मार्क कर लो, और 3 घंटे में डिसाइड हो जाएगी repository. 3 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए इसे, ठीक है? Now how do you make sure? So all you need to do is, again, if you know that look for the repositories that are in your language. If you know C++, right? So you look for only repositories that are in C++. There are just Google open source repositories for beginners for C++. You will see the list. Why that? Okay. Let me track back. I think there are 2 people who asked on the chat, what is open source? That's a good question. Let me clarify that. Okay, open source is basically all the code that is written that is available for everyone to read, run, and use. So use ka har dafa nahi hota, lekin you can read and run. So this is GitHub is a very common, very popular platform. जहाँ पे ज़्यादातर GitHub and GitLab is the two popular platforms जहाँ पे सारा open source code होता है. Like for example, Facebook अपना काफी ज़्यादा code है, Facebook का open source है. Google काफी ज़्यादा code open source है. Microsoft काफी ज़्यादा open source अपना code open source कर देता है. तो it's available for everyone to go read, understand, change. If change करने के भी कुछ ideas होते हैं, लेकिन but you can go and read easily, right? GitHub पे जाओ and you can do it. Now then we have this. So they are bundled in repository. Repository is like one project of open source. So we call it public repositories. Private repositories भी होती हैं, लेकिन public repositories mean they are accessible, they're readable to anyone, right? So and these are very, very high quality code. If you ever want, as I said earlier, right, you should work with people that are very smart and very successful and all that. So if you want to work with really, really smart people, वो इन repositories पे already काम कर रहे हैं, so you just go and start working on that code base with them. वो एक तो पहले already बहुत high quality code base होगी, right? And then when you make changes in that code, you will get feedback. People will tell you, okay, is your change good or is your change bad, or what can you improve, what is good? वो feedback मिल जाता है आपको. So this is free, no cost whatsoever. You get a chance to work with one of the top developers in the world for free, right? It's such a good deal. I don't understand why people don't do it. Now coming back to the second point, how to pick a repository, right? So काफी सारे repositories होती हैं, उनमें issues created होते हैं. अब issues हैं कि अच्छा हम इस code based project में ये improve करना चाहते हैं, ये improve करना चाहते हैं, ये change करना चाहते हैं, तो issues create होते हैं. And issues में tag लगा, issues को labels लगे होते हैं. So the labels are, I can share my screen later and show you as well, but labels are a good first issue or good for beginners and all that. So you look for those issues and you start working on those issues. Read that issue. अगर issue में अगर clearly explain किया हुआ है क्या changes करने हैं project में, तो ठीक है. अगर नहीं clearly explain किया तो add a comment, ask कि अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, can somebody explain? There will be so many people who will be happy to explain. So open source community is very vibrant. People are very, very helpful. If you ask for help, people will help you out. People will clarify things for you, and you pick an issue and you start working on that, and then you create a pull request. A pull request is like a change in the code, in the project code. So you make changes to the code, you submit the changes. It can be मेरी पहली PR जो थी वो 1 line का change था बस.
That was it. But it was such a, and I remember that was, उस दिन इतना खुश था because it was on one of the Facebook's project, and it was such a, मुझे feedback मिला कि it was good or not, and then I tried again. I started submitting PRs again. So you get feedback from the experts for free, and this is a very good deal. Well, it can be a very small, start very small, and again, it can be a bit hard. Open source projects are also somewhat complicated. So when you download the code, you need to understand it. You need to, but अच्छी बात है कि उनकी documentation बहुत अच्छी होती है. So if you start reading the code, if you understand the code, it's possible. You can ask ChatGPT to explain some of the code if you want. So it's like there are a lot of solutions around it, but try to make this a goal. And if you अगर मेरे पास time कम है, but this is a very important topic. If you want to know more about how to contribute to open source, just Google this term, how to contribute to open source, right? As a beginner, there will be a lot of articles to help you out as well. If not, then just email me and I'm happy to help you as well. This is very important. Now the second part is open source programs. So अब Google Summer of Code का तो काफी लोगों को पता होगा. I think जो open source, खास तौर पे जो open source पे काम करते हैं, right? Google Summer of Code में होता है ये कि you work on open source projects and Google आपको पैसे भी देता है as a student. तो I don't know कितने देता है, I don't remember. मैंने बहुत देर होगी किया था तो लेकिन तो but there are, Google Summer of Code is not the only platform. There's so many other platforms. DigitalOcean का है, MLH है, Google Seasons of Docs है, ये भी है, Linux kernel mentorship program. Take a screenshot of this. I think look for these programs, apply for them, make sure that at least in your undergrad degree you at least do one of them, right? Again, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है. तो you need so इसमें आप open source में contribute करते हो और पैसे भी मिलते हैं. So basically आपको पैसे मिल रहे हैं experts के साथ काम करने में. तो and yeah, there are a lot of like YouTube videos as well that kind of talk about these details on how to contribute to open source. So the resources available. And I think here is talk का basic मकसद है कि I want to highlight what is important, how to do it. I'm pretty sure you are very smart, you will figure it out. But make this as a goal कि अच्छा, you spend a few hours in the next week to first of all contribute to your first repository. In एक हफ्ते में हो जाएगा, एक हफ्ते में पहली PR हो सकती है. So it takes a lot. पहली PR हमेशा सबसे मुश्किल होती है, but you can do it, and then start applying for these programs. Super useful. This can make a huge difference, and this is super useful in the CVs. Like if you अगर आपकी CVs में ये है, तो that's gonna be a killer. Okay, then okay, I will. Okay, now next is side projects and startups, right? So this is something. Again, as I said, start building. So side projects or startups, whatever comes to your mind. As a student, you have a lot of time to do it. Really, बाद में time नहीं होता. लेकिन as a student, you have a ton of time to start solving these problems, and you just need to. It is ये दो point पे focus करना है. Sorry, give me 1 second. I'll be back. I need to just. अच्छा यार, जिसका क्वेश्चन है वो आप Q&A का जो सेक्शन है उसमें ऐड कर दें, तो वहां से इजी रहेगा. इस तरह चैट में ऊपर नीचे हो जाएंगे क्वेश्चंस. Yeah, that's also one option. Yeah, sorry, I'm back now. So मैं बता रहा था कि साइड प्रोजेक्ट और स्टार्टअप से अपने दो चीजों का ख्याल रखना है. बस जो मर्जी करो, doesn't matter really. सिर्फ मेक श्योर कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो. दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व कर रहे हो कोडिंग के साथ. एंड जो बहुत से प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं पता तो just ask your friends around कि अच्छा ठीक है, what do you find difficult in your day-to-day life, or it can be a small problem, it can be a big problem, doesn't matter. और जब किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, mostly you deliver value as well. So just these two things, if you try to solve a problem and किसी को उसका फायदा हो, बस ये दो चीजें माइंड में रख के इससे ज्यादा नहीं सोचना. And do project, start building stuff and start doing these projects or startups, whatever. This is very, very important. I think मैं एक Google के product manager से बात कर रहा था, and he was like, if you have done a startup, you have a very high chance of getting into Google. And that's what helped me as well. So I did a startup.
I learned a lot from it, and that helped me. So don't think of it as like as a distraction. Yes, side things. It helps you with your growth so much. So just keep these two things in mind. As long as whatever you're doing, deliver these two things, then it's in no right. There's a question: does it mean having your own startup, or does it mean working in a startup? It doesn't matter. Both. I think when you're working in a startup, it's like, since a very small team, everybody has that ownership, so it's the same thing, right? So you are, because you are doing a lot of the times जो फाउंडर कर रहा होता है या फिर जो एक क्रिटिकल मेंबर होता है स्टार्टअप का, they're both doing something very similar. They both have that ownership element. So that's what's important here. I think I'm running late in time. Let me just quickly move forward. Past feedback loops. This is something generally growth clear. If you think about it, growth means doing something, learning from it, and then doing things again in a better way, right? That's basically it. And अगर आप कुछ करते हो, उसका आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, या बहुत देर बाद मिल रहा है, तो उतनी आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी. So you want to do things, उसका फीडबैक मिले और दोबारा करो ताकि और इम्प्रूव हो जाए. So the faster you make this cycle, the faster it gets, right? So the faster the feedback loop cycle is, the quicker you grow. So इसमें कुछ भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हो, मेक श्योर कि फीडबैक मिले, वरना वो पता ही नहीं चलता कि क्या फायदा है क्या नहीं किया. अगर कोड आपका रिव्यू नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल कोई कोड को पढ़ के फीडबैक नहीं दे रहा, देन इट्स नॉट, या कोई यूज नहीं कर रहा उस कोड की फंक्शनैलिटी को, you won't get the feedback. So make sure that's an important element. Now, job applications. ये कुछ tricks हैं. I think a lot of people are this is very useful for 3rd and 4th year students. How to when to apply to jobs. एक तो जो the most common question जो मेरे पास आता है कि कौन सी language सीखनी चाहिए, कौन से framework सीखने चाहिए, कौन से particular tools सीखने चाहिए हमें, जो आजकल पॉपुलर है, या गूगल में जाने के लिए, या फिर किसी भी बड़ी टेक कंपनी जाने के लिए. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज गो टू द करियर्स पेज ऑफ गूगल या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल, व्हाटएवर. गो टू द करियर्स पेज, उस पे पब्लिक है. उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी और प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी. 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, राइट? अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली लिखा होगा क्या लैंग्वेज चाहिए, क्या फ्रेमवर्क चाहिए, और क्या ये चाहिए, ठीक है? और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली बात को भूल जाओ, वो स्किप कर देना. बस यू फोकस ऑन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, एंड यू लुक फॉर किस तरह की पोजीशन चाहिए. इफ यू वांट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की टीम में जाना है, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की टीम में करियर जॉब पोस्ट खोल लो, और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो लिखी आएंगी. एंड बड़ी कंपनीज के हमेशा जॉब पोस्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो मसला नहीं है. तो वहां पे रिक्वायरमेंट्स क्लियरली आ जाएंगे, और यू विल गेट द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट्स द ट्रू सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर आप मुझसे पूछते तो मैं भी वही बताऊंगा कि अच्छा हाँ, आजकल गूगल में हम गो लैंग के लोग हायर कर रहे हैं, या फिर व्हाटएवर C++ के हायर कर रहे हैं, व्हाटएवर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सही इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल है. तो गो लुक एट देम, एंड उससे यू कैन टारगेट एज वेल. अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स आ गई, मेक दैट एज योर चेकलिस्ट कि अच्छा मैंने ये सीखना है और ये सीखना है, देन आई कैन अप्लाई टू दिस जॉब, right? The minimum requirements are bare minimum. That make that as your checklist. As soon as you complete your checklist, apply. उसमें जो एक्सपीरियंस का लिखा हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, forget about that. Don't worry about it. ठीक है? Just apply. As soon as के वो minimum requirements पूरी हो जाएं, just start apply. And apply to as many places as you can. I mean, you should, if you think, a lot of people don't apply to Google because they think they're not good enough. And I think that's a complete that's a very bad reason, because you don't know and you're good enough or not until you actually interview. कोई नहीं बता सकता आपका, कोई दोस्त नहीं बता सकता, आपके टीचर नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता. The only person can tell you whether you're good enough or not is when you get accepted or rejected in the interview. That's the only data point. आपको खुद नहीं पता कि some people are more confident, some people are underconfident, some people feel like okay they haven't, इतने years नहीं है या इतना ये नहीं है, तो it doesn't matter really. For me, because this is very related to me, because मैंने भी
I mean, मैं ये सोच रहा था गूगल में क्यों अप्लाई करूं यार. I mean, that's way too good for me. Like Google is just crazy good. तो I'm never good enough ever. मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा यार तू अप्लाई कर दे, देख ले. तो मैंने and I applied and applied. A week later I got a call and all the interviews went super straightforward and I got it. So it was not even, so वो assumption मेरे अपने दिमाग में थी कि यार मैं I'm not good enough. तो look at the requirements. अगर requirements पूरी हो रही हैं, apply and just apply to more and get a better interviewing. अब interviewing is also a skill, right? And nobody class में कोई नहीं skill करता. So how to apply to Google? careers.google.com. Just go and वहाँ पे you can just apply. And कोई reference की जरूरत नहीं है. References don't help much. It's in the end it's purely based on your capabilities. In Google, my experience, I have referred so many people, never helped anyone. So doesn't help. Referrals are useless in these large companies. So just apply online and it all works. So and get better at interviewing. Interviewing is a very important skill. यहाँ पे the more you interview, the better you get at it. So अगर छोटी कंपनी, अगर एक कंपनी नहीं भी ज्वाइन करनी, ठीक है, अप्लाई कर दो, इंटरव्यू करो, बाद में रिजेक्ट कर देना अगर नहीं ज्वाइन करनी, कोई मसला नहीं है. लेकिन इंटरव्यू एक्सपीरियंस हासिल करो. That is also a very key skill. A lot of people, and you just a lot of people don't interview. They're very picky. They only want to interview for companies they want to join. And जब वो उस इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही नहीं होता, तो उन्हें पता नहीं होता कैसे बात करनी है, how to sell yourself and all that. So that is very important. And again, learn how to sell yourself, learn how to negotiate. Just technical skills are not enough. So you have to be able to like negotiate offers and also like make sure you are able to sell yourself to all these companies. And this means like knowing इसमें ये नहीं कि अपनी this is different than अपनी तारीफ करना. You need it's called you show and not tell. You just show what you did. कि मैंने ये बनाया. अब इसमें कोई तारीफ नहीं कर रहा. You're just stating facts. कि अच्छा this is what I built, and that's enough. And that's how you sell. You show what you show your capabilities. You don't tell your capabilities. So sorry. I'll try to be more. मैं उर्दू में बात करने की कोशिश करता हूँ. तो या जस्ट आप बस दिखाते हो आपने क्या किया, आपको बताने की, अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है टू सेल योरसेल्फ. तो ओके, अगला now tech in Pakistan. This is a very important slide as well कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान is helping a lot. पाकिस्तान में टेक करियर होना काफी बेहतर होता जा रहा है, आसान भी होता जा रहा है और बेहतर भी होता जा रहा है. एक तो है इंफॉर्मेशन इक्वलिटी है. जो मैंने हांगकांग में पढ़ा है वो एग्जैक्ट सेम कोर्सेज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी वैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है. और अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ रहा है, MIT के कोर्सेज अवेलेबल हैं. MIT इज लाइक इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी राइट फॉर कंप्यूटर साइंस. उसके कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. तो इन्फॉर्मेशन सबके पास हुआ है. तो कुछ ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरे पास ये नॉलेज नहीं है जो कि अमेरिका के बंदे के पास है. बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्टली सेम नॉलेज है. अगर कंप्यूटर है, बेशक तो पाकिस्तान में जहां मर्जी से अगर कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस है तो सेम इंफॉर्मेशन आ सकती है आपके पास. ठीक है. सेकंड, रिमोट वर्क. अब रिमोट वर्क से वो भी, अब इससे ये फायदा होता है कि जो कंपनीज पाकिस्तान में नहीं है, आप उनके लिए भी काम कर सकते हो पाकिस्तान में बैठ के, आपको जाना नहीं पड़ा. ये बहुत कॉमन होता जा रहा है ना. मुझे लगता है अगले 10 सालों में और भी बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा. तो इसलिए रिमोट वर्क पे फोकस, रिमोट अपॉर्चुनिटीज ढूंढो. हर साल रिमोट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जानी है. तो जस्ट ये पाकिस्तान में होने का बड़ा फायदा होता है कि पाकिस्तान में, और कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि कोशिश ही ऐसे करती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज से हायर करें क्योंकि वहां पे लिविंग कॉस्ट कम होती है. तो एक्चुअली अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंपनी शुरू करता हूं और मैंने रिमोट लोग हायर करने हैं, तो मैं इट्स मेक्स मोर इट डजंट, तो मैं स्विट्जरलैंड से नहीं हायर करूंगा कभी भी नहीं. राइट. मैं कोशिश करूंगा कि डेवलपिंग कंट्री से हायर कर लूं क्योंकि वहां पे मेरे लिए इकोनॉमिकली बेटर है. बस ये किसी भी कंपनी के लिए इकोनॉमिकली बेटर है. तो इससे एक्चुअली पाकिस्तान का फायदा हो जाता है कि पाकिस्तान में ज्यादा रिमोट अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ रही हैं एज यूएस या फिर बाकी
बाकी डेवलप्ड कंट्री से। अच्छा, और एक और आई थिंक दिस, मुझे लगता है कि आगे आगे अगर मैं देखता हूँ 10 या 15 सालों में बड़ी कंपनीज कम होती जाएंगी और या खत्म होती जाएंगी और छोटी छोटी स्मॉल टीम्स बढ़ती जाएंगी। इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं देख रहा हूँ अभी पिछले पिछले कुछ पिछले 5-6 सालों से भी होता आ रहा है, क्योंकि अब कई बड़ी कंपनी, कई बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो कि सिर्फ 5-6 लोगों ने चला रहे हैं। सो छोटी छोटी टीम्स, और अगर पाकिस्तान में भी अपनी कंपनी शुरू करते हो या पाकिस्तान में भी, तो जरूरी नहीं है कि वो कम सक्सेसफुल हो। आई थिंक बड़ी कंपनीज कम से कम होती जाएंगी और छोटी छोटी टीम्स और छोटे छोटे जो कंपनीज हैं वो उनको उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। अनदर रीजन, पाकिस्तान में कुछ करियर कंप्यूटर साइंस का करियर शुरू करना और या सीखना बहुत सस्ता है। अगेन कोर्सेज अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल है, and you have access to internet, or it's not बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। पाकिस्तान में जनरली टेक में करियर शुरू करना बहुत महंगा नहीं था, तो यूनिवर्सिटी जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। और खासतौर पे अगर कोई बंदा अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है, पर खासतौर पे टेक में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूएस से कोई आइडिया ले आओ, पाकिस्तान में वही इंप्लीमेंट कर दे, इंडिया से कोई आइडिया ले आओ, पाकिस्तान में वही इंप्लीमेंट कर दो, सेम मार्केट है और डिजिटलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। दिस इज माय लास्ट स्लाइड, इसके बाद मैं और नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत बोल लिया। आई वांट टू हियर एवरीवन एल्स एज वेल। वुमेन इन टेक, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में कि फॉर वुमेन टेक इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, टेक सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर करियर। क्यों लगता है मुझे? I mean, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, शायद इस वजह से भी आई एम बायस्ड, लेकिन मुझे इन ये पॉइंट्स से साफ मुझे समझ आती है कि फॉर वुमेन, एक तो इंटरव्यू, ज़्यादा टेक कंपनीज में इंटरव्यू बायस नहीं है। लाइक मैं गूगल में हूँ, आई इंटरव्यू पीपल, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, लेकिन मैं अपने फीडबैक में कभी भी ये नहीं मेंशन होता कि ये लड़की है या ये लड़का है। डजंट मैटर, मैटर नहीं करता। प्योरली मैटर करता है कि क्या ये इसने सवाल का सही जवाब दिया या नहीं दिया। वो जहां मर्जी है, वो जिस मर्जी एज का है, जो मर्जी जेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और काफी ज्यादा टेक कंपनीज ऐसी हैं, वो इंटरव्यू में वो बायस नहीं है, जेंडर बायस बिल्कुल नहीं है। एंड सेकेंडली, आई नो पाकिस्तान में हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज लिमिटेशंस हैं कि कुछ जगह पे औरतें घर से बाहर नहीं जा सकती, राइट? तो उनके लिए टेक अगेन बहुत अच्छा करियर है, घर से काम कर सकती हैं, सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट, राइट? तो वो घर से बैठ के उतने पैसे कमा सकती हैं। और एक और पाकिस्तान में एक और भी अनफॉर्चुनेटली काफी जगह लड़कियां स्कूल भी नहीं जा सकती, राइट? तो स्कूल में बेचारी जा पाती हैं। तो लेकिन ये भी यहाँ पे भी टेक में ये मसला नहीं होता, क्योंकि अगेन टेक के लिए जब भी कोई स्कूल जाना जरूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी जाना जरूरी नहीं है, आप घर से भी सीख सकते हो, जस्ट टेक एंड इंटरनेट। तो दिस इज वेरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट, एंड फॉर जो औरतों के लिए पाकिस्तान में ये काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो टेक में करियर, ये पहले ये पॉसिबल ही नहीं था। कुछ साल पहले अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते या स्कूल नहीं जा सकते तो आपका कोई करियर नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। ये अब पहली दफा हिस्ट्री में पॉसिबल हुआ है कि आप घर से बैठ के स्कूल जाए बगैर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एंड मैं लास्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ मैंने कि हाईएस्ट पेड जॉब फॉर वुमेन, और मोस्टली इन टेक में काफी ज्यादा हाई सैलरीज होती है फॉर वुमेन एज वेल। और अगेन अगर कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहिए, नहीं पसंद, राइट? तो उन्हें जरूरत नहीं है। हमारे टेक के करियर में ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है वैसे ही। you're interacting with a computer, not with the human being very often. तो दिस इज व्हाट आई थिंक, मैं एक यानी जो पाकिस्तान में औरतें हैं उनके लिए आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपने टेक के करियर को आगे बढ़ाएं, एंड काफी आई थिंक थिंग्स विल गेट easier for them as well further. Okay, that's it from my side. I think मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया. I didn't expect कि इतना ज़्यादा आगे चला जाएगा, लेकिन I think questions भी काफ़ी interesting थे, तो I continued working with that. लेकिन अब I can jump fully to questions.
ठीक है अरसलान भाई, तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले जो लीड्स हैं हमारे पास, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो दे दें क्वेश्चन, और फिर बाकी मेंबर्स के पास चलते हैं, ठीक है? ओके या हाँ, लीड्स जो हैं वो किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं तो बताऊँ यार, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है लीड्स का. Should I go to the Q&A then? चलें फिर Q&A पे ही चलते हैं अभी कोई. ओके Q&A. तो पहला क्वेश्चन है अब्दुल मोमिन से, हाउ टू बिल्ड इन ग्रुप्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें let me clarify. मैंने जैसे कहा कि वर्किंग विद पीपल, वर्किंग विद स्मार्ट पीपल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? उससे आपकी लर्निंग और ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है. हाउ टू डू इन ग्रुप्स. देयर आर इसकी कुछ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, राइट? अब एक है पेयर प्रोग्रामिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है. एक कंप्यूटर होता है और दो लोग होते हैं, दोनों कंप्यूटर में बैठ के स्क्रीन शेयर करके यू कोड, एंड एक बंदा कोड करता है, दूसरा कोड देखता है, एनालाइज करता है, फीडबैक देता है, और वो लाइव फीडबैक मिल रहा होता है. लाइक मैंने फीडबैक की बात की है, तो एक बंदा कोड, अब एक लाइन लिखता है, उसको फीडबैक मिल जाता है दूसरे से, राइट? तो वो बड़ा फास्ट फीडबैक लूप होता है, और आई थिंक मुझे ये बहुत पसंद है. आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई इट. पेयर प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे जस्ट पेयर प्रोग्राम, एंड उसमें हर लाइन पे डिस्कशन हो रही होती है कि अच्छा हमें इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, एंड डिस्कशन जो सुपर वैल्यूबल होती हैं, ठीक है? दूसरी चीज है कोड रिव्यूज. अगर पेयर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि आप कोई भी कोड लिख रहे हो वो दूसरा बंदा रिव्यू कर सके, एक बंदा दूसरा ग्रुप में रिव्यू कर सके, ठीक है? कोई भी ऐसी लाइन ना हो, या कोड की ऐसी लाइन ना हो जो रिव्यू ना हुई हो, जिसपे आपको फीडबैक ना मिला हो. तो ये दो बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजीज हैं, एंड ट्राई देम आउट. एंड ये दो स्कूल में भी इस्तेमाल होती हैं, यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल होती हैं, और ये इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होती हैं. गूगल में भी हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. तो does that answer your question? I think yes, होगा probably, I don't know. Okay. Okay, I think Muid Rafiq, somebody wants to unmute chat पे. मैं कर देता हूँ उनको. Hi, can you guys hear me? Yes. Yes. I thank you so much for your time, Arsalan. It was actually my first event and it was very, very helpful. I just want to add something here. Everything was amazing, but I just get to see a lot of questions about coming from people about how to end up at Google. I just want to add something here that the end goal should not be ending at Google. The end goal should be just polishing your skills. I just want to tell that because we have a lot of attendees here, and I just want to add that to a lot of young students who are trying to get better, that when he started working, it was not because he wanted to end up at Google. It was just because he wanted to get better. So that's what you do every day, right? It reminds me of what Abraham Lincoln said, that I would prepare and one day my chance will come. So you just prepare and your chance will come, right? Yeah, that's about it. And great session. Loved it. Thank you. Thank you. Yeah. I'm a knows me for a few years, so I think she knows my career journey very well. तो इसलिए I think that's very true. Like मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था कि अच्छा गूगल में जाना है. मेरे दिमाग में था अच्छा ठीक है यार, ये मुझे पसंद है, मजा आता है कि मेरे सामने बैठ के काम करने में, तो इसमें बस अच्छे होना है, इसमें ऐसा हो कि यार कि सब कहें कि यार अरसलान बड़ा कमाल काम कर, अरसलान की अंडरस्टैंडिंग बड़ी कमाल है. मेरा बस यही था. And trust me, अगर if you have that mindset, you will end up somewhere nice, somewhere you'll be really good at. That's a guarantee. And yeah, that's so I completely agree, Jo Monica. Yeah, that's about it. I would not hog any more of your time. Thank you so much. Good job organizing it, and yeah, great. Thank you. Thank you, Emma. Thank you. Okay. Next question. Okay, अगला question है, which language does it take you to become a good developer? Does it take to become a good developer? Like, doesn't matter. Like honestly, language doesn't matter. मुझे अभी I work with like 4-5 languages. Language सीखना भी एक language अच्छी तरह सीख लो, deeply,
go very deep in it, become an expert. बाकी ठीक है, और जरूरी नहीं है उस लैंग्वेज में सारी जिंदगी काम करोगे, doesn't matter. उसके बाद you just need to just work on any language, and एक लैंग्वेज सीख ले तो दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान होती है, and that helps altogether. तो it doesn't matter, the language doesn't matter. Okay, any live questions? मैं लोगों की भी आवाज सुनना चाहता हूँ यार. It's like it's so sad कि मैं बस बोली जा रहा हूँ and like nobody else is speaking. और कोई live question है? इससे पहले मैं बाकी question में jump करूँ. Okay, my chat से भी एक question आ गया, which is, do you still work in Java? What do you think about its scope in the coming years? Okay. मैंने जावा में काफी देर से काम नहीं किया, कोई तीन साल हो गए नहीं काम किया, लेकिन ऑनेस्टली अगेन पॉपुलर लैंग्वेज है, काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, काफी टूल्स हैं, लेकिन काफी ज्यादा चीजें पॉपुलर है, तो काफी चीजों का काफी ज्यादा स्कोप है, ये मेरा आंसर रहेगा. तो इट डजंट मैटर, तो ये इन चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए कि मैं अभी के लिए एज अ सेड कि जो चीज अच्छी लग रही है करो, इट्स फाइन, and become good at it. Okay. बाकी let me jump, मैं Q&A section में वापस जा रहा हूँ. Wait, ये सारा Q&A खत्म हो गया? I can't see. I think खत्म हो गया, वो क्वेश्चन शो नहीं कर रहे वहाँ पे. Yeah. Okay. कुछ private DMs आए हैं. I can try to talk about those questions, या फिर chat पे जो questions आए हैं मैं उनको कर लेता हूँ. What kind of questions are asked in the अच्छा अरसलान भाई, आप एक चीज बता दें कि आपने गूगल में भी काम किया, उसके अलावा कंपनीज में भी, तो आप डिफरेंस वहाँ पे जो कंपनी कल्चर होता है आप देखते हैं कि कंपनी कल्चर में यार आई थिंक काफी डिफरेंट था. अब गूगल इज लार्ज कंपनी, तो उनका होता है कि वेल बीइंग पे काफी ज्यादा फोकस होता है कि अच्छा ठीक है, ज्यादा लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस लेवल्स काफी कम होते हैं, तो लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लोग बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े उन्हें, एंड लाइक दे आर वेरी केयरिंग इन दैट रिगार्ड. बट इफ यू, मैंने पहले स्टार्टअप में काम किया था, वहां पे सीन नहीं होता, वहां पे इट्स स्ट्रेसफुल, वी वर्क हार्ड, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स लाइक जो मैं इस तरह से कहता हूँ कि गूगल में इट्स मोर लाइक पीस टाइम वर्क, whereas startups are a lot more like wartime, and it's like very hustling, very high energy, and you have to do a lot, and with Google it's more peaceful. So dono ke apne benefits hain. I don't think that's why I don't think working, at least early in your career, try not to be in a peaceful company, try to be in a company that is fighting. Okay, so it's uncomfortable, but it's like very much better to learn. Okay, thank you. Okay. Cool. Okay, so chat में और जिन्होंने Q&A डाले थे, अच्छा Q&A आ गया, वापस आ गए, नहीं नए क्वेश्चन आए, आई थिंक, हाँ नए क्वेश्चन आए. मैं Q&A से दोबारा जा रहा हूँ मैं. How the Google will dominate the search engines in the upcoming time like ChatGPT? Oh, nice, that's a good question. So yeah, मैं सोच ही रहा था अभी कोई ChatGPT पे क्वेश्चन नहीं आया अभी आज, तो there you go. तो यार honestly we don't know ये Google will dominate or not. Google is the leading search engine आज तक तो ये है, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत आई थिंक टेक इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है, अगर आप 10 सालों में इनोवेट नहीं करते ना तो यू डाई. IBM के साथ हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही हुआ, हर कंपनी के साथ, फेसबुक के साथ हो रहा है. अगर 10 सालों में यू डोंट इनोवेट, यू डोंट चेंज, यू डाई. So Google needs to innovate as well. So they're working on it, and hopefully we'll see. लेकिन I think हम consumers के लिए ये एक अच्छा competition है कि हमें better search मिल रही है. बेशक वो Google से मिले, कहीं और से मिले, हमें better search मिलेगी. But Google of course is working on to make sure कि search engine के dominance है वो Google के पास ही रहे. That's very important for them. So I don't have a yes or no answer, but I think it's good either ways. अगर Google की search engine बेहतर रहती है तो और भी अच्छा है, अगर कोई और Google से बेटर कर लेता है तो good, that's also good. हमें तो फायदा ही हो रहा है. तो
Okay, can you please guide about your about a good FIP idea? FIP ideas again. FIP के idea, FIP के बारे में सोचना is very important. And again, वो करो जिससे I mean FIP से पैसे बनाना मुश्किल होता है वैसे भी, तो don't think about money. Try to solve a problem and deliver value. और इसमें पहले ऐसा करना चाहिए कि you hunt for problems. सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ प्रॉब्लम्स को नैरो स्कोप करना है. कई लोग होते हैं जो सोल्यूशन पहले सोच लेते हैं या फिर उस सोल्यूशन का प्रॉब्लम ढूंढते हैं. ठीक है, अच्छा मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल करके कुछ करना है, अब ये एक सोल्यूशन हो गया. लाइक इसका प्रॉब्लम अभी तक नहीं ढूंढा कि क्या करना है, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम रियली. तो यू लुक फॉर प्रॉब्लम्स पहले. ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कैन बी वेरी इट कैन बी अच्छा इट बेस्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. अब डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो. फॉर एग्जांपल उस दिन मैं सोच रहा था कि व्हेनेवर यू कॉल हेल्पलाइंस यू हैव टू वेट अ लॉट. इट विल बी नाइस अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो हेल्पलाइन ऑटोमेटिकली डायल करके वेट करता रहे, जब ऑपरेटर कनेक्ट हो तब मुझे कनेक्ट करवा दे, तक मुझे वेट ना करना पड़े. तो लाइक डे टू डे प्रॉब्लम में देखो कि अच्छा आपकी लाइफ में क्या है, टाइम बच सकता है, एनर्जी बच सकती है या पैसे बच सकते हैं. ये तीन चीजें जरूरत है, टाइम, एनर्जी, मनी. एंड इफ यू कैन सेव एनी ऑफ दिस with anything, that's your idea. अगर especially अगर आपका वो खुद को वो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो then it's even better. I hope मैं क्वेश्चन का सही जवाब I hope क्वेश्चन का आंसर हो गया उसी तरह. तो let me move on. अच्छा मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है तो इसलिए I make mistakes in उर्दू. लेकिन कभी बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन इसलिए I'm back with a question. Most of companies like Google, Amazon all have similar questions and interviews. So what was the most technically challenging question that you got to face at Google? I don't remember clearly जो many major questions आए थे, but I do interview people, so I have some idea on what are the technical focus किस पे किया जाता है? Focus यार अच्छा जो personally mostly मैंने जो देखे हैं the questions are less about कि algorithm आपको याद है कि नहीं याद है. It's not about algorithm. At the core level, it's about data system algorithms. तो जनरली जो कुछ इंटरव्यूज ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा ये आपको बिग एल्गोरिथम याद है कि नहीं याद है. ठीक है, वो बता दो. क्वेश्चन होगा उसमें सीधा आपको एक एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, स्ट्रेट अप, राइट. तो उसमें डिपेंड करता है आपने टेक्स्ट बुक कितनी अच्छी तरह पढ़ी है. लेकिन ये बहुत कम होते हैं. मोस्टली जो होते हैं, आई थिंक द मोस्टली जो ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अच्छा हाउ कैन यू थिंक. Sometimes you create your own algorithm. Sometimes it's a simple one, not a very elaborate one, but simple सा एक अपना algorithm बनाते हो, very tailored to that solution. And उसका मतलब आपको problem से इतना समझ आया, very tailored to that problem. इसका मतलब आपको problem से इतना समझ आ गया, उसकी limitation सारी समझ आ गई हैं, और उसके लिए आपने एक custom algorithm बनाया iteratively. ऐसा भी नहीं है कि आपको पहली दफा ही आपने सबसे most optimized solution निकाल लिया है. It can be just like very simple, step by step. You try to find and you use your logic, not what you remember from textbooks. So those are the most common ones, and those are the things that are more important ones as well. All right, thank you. No worries. Okay. Any other live questions before I move on? मेरा एक question that you mentioned about open source and आपने इस सारी चीज के बारे में बताया, तो जरा उसके बारे में आप जो रिपोजिटरी का बता रहे थे कि रिपोजिटरी में ढूंढना और उनसे फीडबैक लेना, तो जरा इसके बारे में और थोड़ा बताएं. और आपने कहा था कि जीमेल देंगे. मैं अपना जीमेल डाल देता हूँ इधर, चैट में डाल देता हूँ अभी. that is the first, sudo arsalan@gmail.com. Okay, so ये मेरा email है. दूसरा, the second part is and again I think I can add my Instagram and the LinkedIn and Instagram as well. LinkedIn, Instagram I think Mohit share कर देगा बाद में. That's probably better because I don't have the links with me. अच्छा, दूसरा है हमारे पास, your question was the GitHub में, so पहला question था कि कैसे ढूंढने वो issues कैसे ढूंढने जिसमें beginners contribute कर सके, right? ये सवाल था? Yes. अच्छा, I'm just trying to look up. I think I dropped off. My bad.
मैं was link ढूंढ रहा था जो कि that I found useful, and yes, ये वाला link है. This talks about sorry, give me 1 second. नहीं ये वाला नहीं है. मुझे पहले स्लाइड में डाल दे. हाँ, ओके, ये मैं चैट में भेज रहा हूँ. या सो दिस इज अ वेरी गुड लिस्ट. ये सारी रिपोजिटरीज की लिस्ट है जो बिगिनर्स के लिए काफी. मैं शेयर मैं एक्चुअली शेयर भी कर देता हूँ स्क्रीन पे. या स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नहीं, स्क्रीन नजर आ रही. लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन. ओके, अब नजर आ रही स्क्रीन? Yes. Okay. So this is like इसमें सारी लैंग्वेजेस आती हैं and you can just pick what language. अगर for example JavaScript आती है, right? So you go to JavaScript and these are all the projects. And अब इस project में for example ये पहला project है, इसमें आपने label ढूंढना good first issue. So you copy this, you go to this repository, right? And आप issues में जाते हो and issues में जाके you search for this label. 1 minute. Maybe they don't have it here, but let's see. कुछ laboratories में खत्म हुए होते हैं good first issue वाले. Good first issue 2 हैं. तो if you click here, ये अब ये 2 हैं that are ये जो issues हैं ये beginners के लिए हैं, right? So you can just do it, right? And then उसके अलावा तो ये सारी repositories की list है इधर. So you can pick a repository जो भी अच्छी लगे. ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस पे. एंड उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा लेबल इस्तेमाल हो रहा है. जैसे अब ये किंटो JS है एंड इजी पिक इनके लिए इसका एक लेबल है, राइट? तो यू गो टू इश्यूज अगेन एंड यू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर लेबल, इजी पिक. इजी पिक इसका एक इशू अवेलेबल है. तो दिस इज हाउ यू कैन सर्च, राइट? ओके, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन. हाँ, another good first issue seems very hard to me. यार, the thing is, issue पे comment करके जो difficult लग रहा है, issue पे comment करके just look, ask questions, लोग जवाब देते हैं. Like यहाँ पे you can go and अगर नहीं समझ आ रही तो you can sign up. You can of course you need to sign up and then you add a comment and ask questions जो नहीं समझ आ रहा, right? And that people will answer. Look, and अगर and then try to go for another repository. अगर बहुत मुश्किल लग रही है तो try to go for another repository. Yeah, try to I mean, and you need to understand. Like इसमें कुछ 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे to understand the code base. So it will take some time. Okay. Next is Q&A. Is what is next? Oh, questions काफी ज़्यादा होते आ रहे हैं. I would love to hear more about what to do whilst managing core and what to do at Google whilst managing core infrastructure. It's a very detailed question, but generally I develop something like Kubernetes in Google और उसको manage करना और run करना. That's my core responsibility in simple terms. But it can get very complicated. काफी चीजें हैं जो कि Google के internal हैं, तो I can't talk about them. But at a high level, it's something similar to Kubernetes that जो मैं develop करता हूँ और काम करता हूँ और run करता हूँ. Okay, how to begin with web development? Like where to start? How to begin with web development? I think again very basic is to start with one. There are many frameworks like React है और Angular है, Vue.js है. Just एक framework, web framework, pick that up and start building your own website line by line. So and basic, just open a YouTube tutorial, just follow that completely, like do what they say, and eventually like that's how the best way to learn programming, I think, is by building stuff. So you need to build stuff in order to learn. The questions are a lot, so मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी I'll go through all of them.
एंड ओके, कोई लाइव क्वेश्चंस मीनवाइल? अरसलान भाई मेरे 2 क्वेश्चन थे। sorry. एक सीरीज के रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल हमने एटीएस का सुना था कि एटीएस भी आजकल कुछ है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कंपनीज यूज करती, फॉर एग्जांपल अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मोहित को बोलो, that's पहले भी उसने कोशिश की है, उसके बाद असीम कम टू यू। ओके, तो क्वेश्चन था एटीएस के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपकी सीवी वो जो कंपनीज, फॉर एग्जांपल मैंने जॉब सबमिट की है, ठीक है, तो दे सॉर्ट आउट इसकी बेसिस पे एटीएस की कीवर्ड्स की, कुछ कीवर्ड्स की बेसिस पे आपकी जो सीवी है वो सॉर्ट आउट होती है। तो इस तरह का कुछ वाकई होता है? हाँ, ये कुछ कंपनीज में होता है, कुछ कंपनीज में नहीं होता। सब कंपनीज में नहीं कह सकते ये, लेकिन यस दैट्स व्हाई क्योंकि कीवर्ड्स की बेस पे अगर उन्हें, अब फॉर एग्जांपल उन्हें चाहिए कि स्किल्स चाहिए जो कि वेब डेवलपमेंट की है, राइट, तो वो फिल्टर वो सीवीज देखेंगे कि टॉप 100 सीवीज जिसमें वेब डेवलपमेंट मेंशन हो या कैसा भी मेंशन हो, तो इसलिए आई गेस दैट मैटर्स। लेकिन वो वही कीवर्ड्स होंगे जो कि जॉब रिक्वायरमेंट्स में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, जो जॉब रिक्वायरमेंट नहीं मेंशन किए हुए वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इफ यू यूज द जॉब रिक्वायरमेंट, जो करियर्स पेज पे जॉब रिक्वायरमेंट होती है, उसको एक चेकलिस्ट बना के करो और वो वाली चीजें सीख लो, देन योर एप्लीकेशन इज वेरी टेलर्ड टू दैट, देन यू आर लाइक वेरी टारगेटेड, एंड देन चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपकी सीवी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड ये था कि फॉर एग्जांपल आपने प्रिपरेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स, लीड कोड जैसे होता है, और एल्गो एक्सपर्ट है, अभी एल्गो एक्सपर्ट मैंने तब नहीं था, लेकिन लीड कोड मैंने इस्तेमाल किया था। लीड कोड पे मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन लीड कोड के डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन लीड कोड वही होता है कि लीड कोड हैकर रैंक वो आपको एक माइंडसेट देती है कि अच्छा आपने सॉल्व कैसे करना है, एक स्किल है। और कई लोग इसमें अच्छे नहीं होते शुरू में, कई लोग बुरे होते हैं, और जो लोग बुरे होते हैं वो, लेकिन वो सीख सकते हो आप, जैसे मैथ की तरह है, ठीक है। मैथ में यू प्रैक्टिस, द मोर जितने प्रैक्टिस करोगे आपको बेहतर हो जाए। कई लोगों को थोड़ा ज्यादा घंटे लग जाते हैं, कई लोगों को कम घंटे लगते हैं। तो वो लीड कोड से आपको वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना और उसका एल्गोरिथम बनाना, वो आ जाता है। एक स्किल है किस्म से, ये सीखनी पड़ती है। इसमें आई डोंट थिंक कोई नेचुरली बेटर होता है, कोई नेचुरली बुरा होता है। इसमें बस आपको टाइम लगाना पड़ता है, कहीं वो कम टाइम लगता है, कहीं को ज़्यादा टाइम लगता है, बट या दैट इज इम्पोर्टेंट, लीड कोड, हैकर रैंक। और थर्ड मेरा ये था कि जो फॉर एग्जांपल आप सिस्टम डिजाइन सीख रहे हैं, तो आर देयर स्पेसिफिक जॉब फॉर दैट रोल, जिसमें जनरली होता ही है कि जो जूनियर रोल्स होते हैं उसमें सिस्टम डिजाइन नहीं चाहिए होता काफी ज्यादा, लेकिन जब सीनियर रोल के लिए अप्लाई करते हो तो तब आपको सिस्टम डिजाइन नहीं चाहिए, क्योंकि तब आप एक किस्म का आप डेवलपर भी होते हो और एक किस्म का आर्किटेक्ट रोल भी होता है आपका, जिसमें आप पूरा सिस्टम आर्किटेक्ट कर रहे हो कि अच्छा डेटाबेस कहाँ होगा, फ्रंट एंड कितना होगा, कैशिंग कहाँ होगी, लोड बैलेंसर कहाँ होगा, लाइक ये सारे कंपोनेंट्स कैसे एक साथ आएंगे। तब आपको एक आर्किटेक्चर लेवल नॉलेज भी होना जरूरी है, तो वो लेकिन जूनियर लेवल्स पे वो जरूरी नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स आ जरूरी है। ओके हसीब, ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बड़ी कंपनीज हैं जिस तरह गूगल, फेसबुक हो गया या अमेज़ॉन होगी, तो ये जो प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं इन सपोज इन मशीन लर्निंग होगी या डीप लर्निंग के लिए, तो ये स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो यूजुअली कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं लोग? ये फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए गूगल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फ्रेमवर्क गूगल के अंदर ही है सिर्फ, और यूट्यूब का भी, सॉरी फेसबुक का भी ऐसा ही है। तो वो फ्रेमवर्क ज्यादा ना ही बेसिकली आप सीख नहीं सकते, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है गूगल से बाहर, तो इसलिए वो आपको वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि आपको सीख किया। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मेरी एग्जांपल है गोलैंग, गो एक लैंग्वेज है जो गूगल ने बनाई है, जो कि ओपन सोर्स है और लोग इस्तेमाल करते हैं, बाहर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती थी व्हेन आई इंटरव्यूड, लेकिन जरूरी नहीं है, तो इट वाज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर कोई भी लैंग्वेज होगी मैं सीख लूंगा, मुझे हफ्ता दो, 3-4 दिन दो, मैं सीख लूंगा, इट्स फाइन। तो आपको बस वो होना चाहिए कि जर्नल की सिर्फ, इसलिए मैंने फाउंडेशंस की बात की, कोर फाउंडेशंस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद आप नई, और कंपनीज वही टेस्ट करती हैं कि कोर फाउंडेशंस कितनी स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि ये बंदा
हमने सालों के लिए हायर करना है तो ये कुछ महीनों में सीख लेगा whatever is required. तो लेकिन अगर कोर फाउंडेशंस वीक हुई तो फिर बाकी चीजें पे मैटर करेंगे. Hello sir, Assalamu alaikum. Steve, are you done? Yes. Okay, one more question. Okay, Yeah, अच्छा, एक क्वेश्चन ये हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो अक्सर सीनियर से भी सुनने को मिलता है कि जो डॉक्यूमेंटेशंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, आर्किटेक्चर्स वगैरह हो गई, तो इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती. वैसे मुझे तो अभी तक आइडिया हो गया कि हाँ इनकी ज़रूरत वाकई है और किस हद तक है, लेवल तक है, लेकिन अक्सर जो लोग हैं वो ज़्यादातर कोडिंग की साइड पर ज़्यादा शिफ्ट होती है और उनका फोकस ज़्यादा कोडिंग की तरफ होता है. तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस कितनी है? ये काफी सही क्वेश्चन है. और हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स कोडिंग में तो इस्तेमाल हो नहीं रहे तो मुझे क्यों चाहिए, राइट? तो भी आर्ग्यूमेंट होती है कि अच्छा ये जो मैं जो एल्गोरिथम्स पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर जो सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ, या फिर जो कि और जो नॉर्मली लो लेवल कंप्यूटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पाइपलाइंस एंड सीपीयू पाइपलाइंस एंड रैम एंड ऑल दैट, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं जनरल कोडिंग में इस्तेमाल नहीं होता तो मैं क्यों सीखूं. शुरू में ऐसा ही लगता है, एग्जैक्टली यही है, और शुरू में ठीक है, लेकिन जब आप फिर एक टाइम आएगा जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स आपकी, अगर ये कॉन्सेप्ट्स ना हो आपके पास, आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी. तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें ये कोर फाउंडेशन जो ये कंप्यूटर साइंस के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से आप आसानी से ग्रो कर लेते हैं. स्पेशली अब जैसे गूगल से पहले मैंने कभी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किए थे. गूगल में आने के बाद क्योंकि स्केल और रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी इतनी जरूरी है, अब मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने पड़े मुझे. तो बिल्कुल शुरू में नहीं चाहिए होते, मिड टू सीनियर लेवल में ये कॉन्सेप्ट बड़े जरूरी हो जाते हैं. इसलिए स्टडी एंड प्रॉब्ली अभी पढ़ोगे लेकिन प्रॉब्ली भूल जाओगे, लेकिन एक दफा अच्छी तरह पढ़ा होगा तो दोबारा याद करने में आसानी होगी. Hello sir, Assalamu alaikum. यस Sir, I am Munesh speaking. हाँ जी, बोलो. सर मैं मुनेश बात कर रहा हूँ. हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एक अच्छा डेवलपर कैसे बन सकता है, किस लैंग्वेज को यूज करना चाहिए? लैंग्वेज अच्छा डेवलपर डेवलप करने से बनोगे, सिंपल. जो मर्जी लैंग्वेज इस्तेमाल कर लो, फर्क नहीं. लेकिन हाँ, अच्छा एक बात है कि एटलीस्ट सी या जावा में से एक लैंग्वेज सीख लो ताकि थोड़े से लो लेवल कॉन्सेप्ट्स आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज सारी जिंदगी इस्तेमाल करो. एक दफा सीख लो सी या जावा में. आई थिंक ये दोनों काफी डीप लैंग्वेजेस हैं, काफी लो लेवल लैंग्वेजेस, तो उससे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाते हैं. उसके बाद यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज हैं दैट आर इम्पोर्टेंट, उनको एग्जाम जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्सेज का कंटेंट बहुत जरूरी है. और उसके बाद जस्ट बिल्ड करने से चीजें बनाओ. I am from Pakistan, Karachi, then Benazir Bhutto Shahid University, second year. I have most experience in database, PSQL, PostgreSQL structured query language, and SQL structured query language. I am interested programming language, the backend. तो आवाज हट जगह एंड पे कट कीजिए, बोलो. सर मेरा शौक इसमें डेटाबेस इंजीनियरिंग में है सर. मैं अच्छा डेटाबेस डेवलपर बनना चाहता हूँ. तो अभी मैं पोस्टग्रेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर काम कर रहा हूँ सर. अभी इससे हम रिमोट वर्क कैसे कर सकते हैं सर गूगल कंपनी से? गूगल कंपनी, हाँ ओके. तो गूगल अब रिमोट वर्क गूगल में अभी एज अ स्टूडेंट वो उससे जो प्रोग्राम्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे, लेट मी गो बैक, ये जो प्रोग्राम मेंशन किए हैं गूगल समर ऑफ कोड, राइट. अगर गूगल के लिए रिमोटली काम करना है एज अ स्टूडेंट, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है. समर ऑफ कोड के लिए अप्लाई करो, पैसे भी मिलेंगे और गूगलर्स के साथ काम भी करो एज अ स्टूडेंट. ये सर अभी मैंने प्रोग्राम अप्लाई किया है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब में. सर अभी मैं अपनी टीम लीड मैनेजर हूँ. ऐसे मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स पूरा किया हुआ है, वेबसाइट डेवलपर फ्रंट एंड. ओके. तो मैं टीम लीड कर रहा हूँ सर बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में. नाइस. फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हो गई है. That's good. Yeah.
सही है. So I think you're on the right track. बस ऐसे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करो and eventually if I understand तो सही ट्रैक पे जा रहे हो. And as a student of course यही प्रोग्राम से जब ग्रेजुएट कर जाओ then you can apply for Google full time position उनकी करियर वेबसाइट से. Okay, I think Abdul Mueed अस्सलाम भाई. अच्छा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का था कि वी नो कि थोड़ी सी ना आजकल इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चलो ठीक है, बट वी आर गोइंग मोर स्पेसिफिकली इनटू द फील्ड्स लाइक आई एम अ साइबर सिक्योरिटी पर्सनल. ओके, सो आई जस्ट वांट टू नो कि इस तरह डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी और से रिलेटेड करता है या प्योरली रिलेटेड टू डेवलपमेंट में, यानी कि सिर्फ जॉब होती होंगे. ओके, हाँ. डेवऑप्स के लिए आई थिंक गूगल में नहीं है, साइबर सिक्योरिटी के लिए है. अगर शॉर्ट आंसर, डेवऑप्स के लिए आई थिंक नहीं है. डेवऑप्स के लिए मोस्टली होता ही है कि लेकिन अच्छा, अगर आप डेवऑप्स में इंटरेस्टेड हो लेकिन आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है तो फिर हाँ, फिर उसके लिए ट्रैक है. लेकिन वो बेसिकली डेवऑप्स को ऑटोमेट कर देते हैं, डेवऑप्स के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं. एग्जैक्टली. तो डेवऑप्स आज सच को मैनुअली नहीं, क्योंकि गूगल की स्केल में मैनुअली काम नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी चीज है. तो इसलिए अगर डेवऑप्स में इंटरेस्टेड हो और लेकिन प्रोग्रामिंग आती है तो उसके लिए रोल अवेलेबल है. एंड फिर उसके अलावा दूसरा जो साइबर सिक्योरिटी का 100% यस. more related to cyber security, if you know, because cyber security के लोग थोड़ा सा ना वो know about थोड़ा कम जानते हैं इन डिवीजन. आई थिंक शायद आपको पता हो कि इसमें कुछ फर्दर डिवीजन्स आती हैं लाइक डिफेंसिव साइड एंड ऑफेंसिव साइड. तो गूगल इज मोर लाइकली किस पे वर्क कर रहा है. और सेकंड ये कि दे यूज देयर ओन टूल, आई होप सो, बिकॉज इट्स अ बिग कंपनी, तो उसने अपने टूल्स बनाए होंगे, ऑटोमेशन वगैरह एंड मॉनिटरिंग टूल्स. देन एनी सजेशंस फॉर दैट कि गूगल अगर ओपन सोर्स है कोई यूज कर रहा है तो उसके लिए हम कौन सा चेक कर सकते हैं. और सिक्योरिटी मेरा एरिया नहीं है, लेकिन आई थिंक गूगल प्रोजेक्ट जीरो है, सुना हुआ है? नहीं, मैं चेक करूंगा. प्रोजेक्ट जीरो यू सेड? प्रोजेक्ट जीरो. ओके, ऑलराइट, मैं चेक करूंगा. क्या करना, तो वो बेसिकली हाँ, तो वो बेसिकली करता है कि ट्राइज टू, जो भी इंटरनेट पे वल्नरेबिलिटीज आती है ना, वो उनका गोल होता है कि सबसे पहले वो फिगर आउट करें, ताकि क्योंकि ज़्यादातर गूगल के यूजर्स क्रोम इस्तेमाल करते हैं और क्रोम से इस्तेमाल करते हैं. तो उनको गोल होता है कि कोई भी मैलिशियस अटेम्प्ट, कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट्स, फिशिंग से लेकर कोई और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, वो सारे वो पहले ही कैच कर लें एज कम्पेयर टू के नाउ. तो it's cyber security is massive in Google. I think large companies के लिए recently कंपनी एक्वायर की है गूगल ने साइबर सिक्योरिटी के लिए, मैंडिएट के नाम से. साइबर सिक्योरिटी मैंडिएट, आई नो. अभी रिसेंटली एक्वायर किया. तो इट्स तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स प्रिटी, but that again, अगर साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंग लगती है तो गो फॉर इट 100%. एंड अगेन अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोबारा करियर पेज पे एग्जैक्टली लिखा होगा क्या क्या चीजें को इस्तेमाल करें, क्या क्या चीजें चाहिए उन्हें. थैंक्स अ लॉट. नो वरीज. अच्छा, अब 12 बज गए. एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर लाइव क्वेश्चंस? अच्छा, जो मैं अब रिटन क्वेश्चंस में आई कुडंट गेट बैक अ लॉट ऑफ देम, बट I think I can try. If you can email me the question, I can try to get back. One last question मेरा अरसलान भाई ये था कि देखिए, अब सबको पता है गूगल में फॉर एग्जांपल आपके राउंड्स होते हैं, DSC आना चाहिए आपको, सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा बहुत आना चाहिए. Exactly. गूगल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बड़ी लिमिटेड सी कम्युनिटी नज़र आती है गूगलर्स की. तो उसकी क्या रीज़न आप देखते हैं कि क्यों इतनी कम लिमिटेड क्यों है? यार आई थिंक इसके अच्छा रीसेंट ईयर में बढ़ी. जब मैं आया था बल्कि 3 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए मुझे गूगल में आए हुए, तो तब बहुत कम थे. रिमेंबर तब पूरे 90 लोग थे जो कि पाकिस्तानी थे पूरे गूगल में, 90. अब यहाँ से 300 हो गए तकरीबन, तो 3 गुना बढ़ गए तकरीबन पिछले 3 सालों में. तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कम है. यार इसका बेसिकली पहले आई थिंक काफी मसला ये होता है कि लोग अप्लाई, मैं बहुत कम लोग हो जाते हैं जिन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है. तो ऐसे भी नहीं है कि जो कहीं अप्लाई करके रिजेक्ट हुए हैं, कई लोग, बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, राइट.
एंड जो अप्लाई करते हैं वो फिर या लोग इस तरह से अप्लाई कर, इस डर से अप्लाई नहीं करते कि यार अगर मैं रिजेक्ट हो गया दोबारा नहीं कभी जा पाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगले साल दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हर साल बेशक अप्लाई कर लो, ठीक है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। एंड सेकेंडली, अब ये सारी चीजें जो ओपन सोर्स का कल्चर है या फिर ये प्रोग्राम्स हैं, ये सारे जरूरी होते हैं उसके इवेंचुअली आपके एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए, और ये सभी पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और बहुत कम लोग गूगल समर ऑफ कोडर करते हैं। तो आई थिंक इस वजह एक फनल बनता है, राइट। तो आप प्रोग्राम स्टूडेंट हो गया, प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हो, आपको अवेयरनेस आती है, आप एक्चुअली बात करते हो, जो कि और मेरे जैसे और गूगल से बात करते हैं, आपको पता चलता है कि एक्चुअली यार ये कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो बंदा भी मेरे जैसा ही है, सारे हम एक जैसे ही हैं। तो एक मोटिवेशन मिलती है और ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती हैं जो मैंने बताई थी आप जॉब एप्लीकेशन के लिए, और जो कि साइड प्रोजेक्ट्स और ओपन सोर्स प्रोग्राम। अब इनको करने से बाद फिर ऊपर था, आई थिंक वो अवेयरनेस कम थी, तो आंसर योर क्वेश्चन, अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम थी और काफी लोग अप्लाई नहीं करते थे। तो आई थिंक अब रिसेंटली ये और ज्यादा होने शुरू हो गया था। अभी रिसेंटली मैं सुनता हूँ पाकिस्तानी ज्वाइन हर कुछ दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो हर 2 दिन में खबर मिल जाती है। अच्छा, नहीं, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद खबर मिल जाती है कि ये पाकिस्तानी नहीं आया है, ऑल दैट। जब मैं पहले आया तब कोई भी नहीं था, तब तो भाई कोई, और खासतौर पे यूरोप में तो कोई भी नहीं था। आई थिंक मैं आया था, उसके बाद साल 1.5 साल बाद शफीका आई थी, तब तो लाइक इस तरह के तब आके यूरोप में 1-2 लोग आए थे, पर वरना और कोई भी नहीं थे। तो यूएस में है काफी ज्यादा, लेकिन बाकी कम थे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। मैं एक क्वेश्चन कर रहा था कि आपने आगे बताया था कि जी जो है ना, अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो खत्म होंगी और छोटी छोटी कंपनीज उठेंगी, तो उसके पीछे आप कह रहे थे कि रीजन है, वो रीजन बताएं, क्या हो सकती है वैसे? कि ले ऑफ्स जो है ये उठाएंगी या कोई इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है। बेसिकली अच्छा, बड़ी कंपनीज क्यों बनती हैं ज्यादातर? बड़ी कंपनी, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बड़ी कंपनी इसलिए बनती हैं जब आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कॉस्ट से। अब फॉर एग्जांपल, अब गूगल ने सर्च भी बनाया, क्रोम भी बनाया, ठीक है। अब क्यों गूगल ने दो डिफरेंट कंपनीज क्यों है, वो एक ही कंपनी में क्यों है? क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत आसानी से हो जाती है, आसानी से हो जाती थी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मुश्किल होती थी, इसलिए गूगल, क्रोम और सर्च एक ही कंपनी के पास है। तो यानी उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है एक ही कंपनी में करने से। दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही, हालांकि सर्च और क्रोम का कोई आपस में लिंक नहीं है, लेकिन दोनों एक कंपनी में करने से बहुत फायदा होता है। और क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत सस्ती होती है और एफिशिएंट होती है, ज्यादा एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है, इसलिए। लेकिन अब रिसेंटली ये चीज बदल जा रही है। इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में बहुत, कंपनी वाइज कंपनी के इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से। तो इसलिए अब अगला अगर कोई गूगल क्रोम आता है या अगला कुछ ब्राउजर आता है, वो सेपरेट कंपनी होगी। तो इट्स प्योरली कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है। इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो इसलिए आई थिंक ये छोटी टीम्स इन्हें ज्यादा एफिशिएंट होती हैं। अक्सर छोटी में डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है और दे कैन आइटरेट क्विकली। बड़ी टीम्स में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। तो गूगल की डिसीजन मेकिंग स्लो एज कम्पेयर टू स्टार्टअप फॉर एग्जांपल। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले 10-15 सालों में छोटी कंपनी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगी। बड़ी कंपनीज भी ब्रेक डाउन हो जाएंगी क्योंकि उन्हें पास समझ आ जाएगी कि यार एक बड़ी कंपनी काफी स्लो होती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर कंपनीज। इसलिए छोटी कंपनीज का ज्यादा रुझान बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ठीक है अरसलान भाई, ये एक था हमारे फेलो के, आर देयर एनी ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज इन गूगल? आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगेन गूगल बहुत ज्यादा चीजें करती है, तो हो सकता है कोई छोटी सी टीम हो जो ब्लॉकचेन पे काम कर रही हो। मतलब कोई ओपन रोल्स नहीं है? ओपन टूल्स नहीं, मेरी नॉलेज में मेरे ख्याल से नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है जब मैंने सुना हो। ब्लॉकचेन में गूगल की इन्वॉल्व होगा अभी तक बहुत कम रही है, लेकिन हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी तक बहुत कम रही है। ठीक है, चले अरसलान भाई अब वाइंड अप करते हैं।
Okay. Thank you so much. Thank you so much, Mohit और बाकी GDSCs जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया. I know ये ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काफी लोग आए थे आज, तो it was just super useful. Yeah, and again, Mohit, you can share my LinkedIn or Instagram and email with all the participants. That would be very useful. I think if they want to reach out to me, if they have any questions, I'll be happy to answer. Sure, मैं कर दूंगा शेयर. Thank you so much everyone ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह फ्यूचर में इसी तरह इवेंट्स करते रहेंगे. अरसलान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम के लिए. No worries, यार. No worries. Thank you so much. चलो. Okay then. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you for your time, Arsalan bhai. Thank you.